this exclusive session. बहुत डिमांड थी, बहुत रिक्वेस्ट थी कि स्कूल्स के साथ टाई अप कैसे करें, स्कूल्स के साथ डील कैसे क्रैक करें, इंस्टीट्यूशन से जाकर कैसे मिले, क्या बात करना होता है, कैसे नेगोशिएट करना पड़ता है. So lot of questions were being asked by a lot of leaders. So we have come up with this exclusive session, how to approach schools and institutions and how to negotiate and fix price and close deals with them. That's very, very important. There's a beautiful saying, एक बहुत अच्छी कहावत है, if I get my foot in, I can get the rest of myself through the door. आप कैसे वो स्कूल या इंस्टीट्यूशन को टैकल कर सके, अप्रोच कर सके, जहां से आपको एक स्टेप मिल जाए जिससे आपका वो डील क्रैक हो और आप उसके बाद मल्टीपल बिजनेस वहां से ले सके. So today, let me tell you, I will going to share my secret, how I generate revenue as well as leads from schools and institutions. And I and Abhilash will going to share our secrets because Abhilash has his own experience with schools and colleges, with institutions, with coaching classes, and I had a different experience because I am connected with various schools, institutions, and coaching classes. So if you close the deal, with institutions or with college, that's great, that's amazing. You generate a good amount of revenue for yourself. But if not, if you can't close the deal, still we will going to share how you can generate good amount of revenue and lead from that. If you don't close the deal, still you can generate revenues and leads from them. So leaders, how to do that? It's the question, right? So if you really want to learn all these things, stay till the end. Don't go anywhere. So let's get started and put our foot in and learn this beautiful skill. So to start the session, let me invite to bring the first perspective about this, how to approach schools and institutions and how to crack this negotiation and fix price and close the deal. Abhilash will put his views and insight, and then I will come and I will share my secrets and my view and my experience into it, right? So let's get started. Let me invite Abhilash to share his view and insight on the same. So yes, over to you, Abhilash. All right. So so today we'll be discussing about the entire process. Right, how to do negotiation, because many leaders were asking us कि negotiation का process क्या है, right? So we'll be discussing about the process, not about theory, but exactly process, मतलब negotiation में होता क्या है, क्या होना चाहिए, right? That's exactly what we're going to discuss. Because हमारे कुछ products है जैसे Enlightening Minds है, wherein we have been doing successful negotiations and deals with international schools, या counseling है जहाँ पे we have done some deals with HR of the companies जो अभी भी हम लोग कर रहे हैं, and with coaching classes, institutes, right? जहाँ पे you can scale up the business to the next level. But एक process है, I will try to simplify it कि कैसे आप face to face, one to one, not only with institutions, with your employees, with your vendors, कैसे आप successfully deal, negotiation कर सकते हैं, how you can create a win-win deal. Because in a negotiation, it has to be purely a win-win deal, right? So we have charted a plan, आपके लिए हमने लिखित में किया हुआ है. So आज का सेशन होगा how to create win-win deals, win-win negotiation कैसे करेंगे. सबसे पहले याद रखिएगा, people want to deal with somebody who is fair, right? यानी कि एक चीज याद रखिए, अगर मैं किसी के साथ कोई डील करना चाहता हूँ, जैसे recently we had done a deal with an NGO, right, based in Chandigarh, जहाँ पे we are going to train around 500 students. So we had sat with the owner of a NGO company, not NGO company, with an NGO, right, who is going to be funded by Germany, from Germany funds आने वाले उनको for training the kids, right? तो उसके लिए भी negotiation लगता है, right? International schools के साथ, HR of the company के साथ हम लोग HR के साथ बैठते हैं या company owners के साथ बैठते हैं, we crack those deals. तो जब भी कोई आपके साथ बैठता है तो एक चीज याद रखिएगा, they like to interact with somebody or negotiate with somebody who is very fair, right? हम जीते या तुम जीतो और मैं हारूं, वो कभी वो चाहते नहीं है, राइट? या मैं अगर समझो मैं हार रहा हूं और वो जीते तो चैरिटी हो गया. डोंट गेट फूल्ड बाय दैट आल्सो. सो पीपल वांट टू सिट विद समबडी हु कैन क्रिएट ए विन विन सिचुएशन, राइट? इस तरीके से कन्वर्सेशन हम लोग करेंगे. आई विल टेल यू द एंटायर प्रोसेस फ्लो, किस तरीके से डील हो जाए. एटलीस्ट यू विल बिल्ड अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन. भले डील्स हो ना हो से गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, राइट? यू मीट 10 people. So whenever I used to go to international schools and meet the the decision makers, you must say, not stakeholders, can be anybody. It can be operations side, it can be trustees, chairman, right? कोई भी हो सकता है. But you need to sit with a decision maker only. Or HR of the companies might be decision maker for a company or for his company, right? He might be reporting to the MD कि भैया, yeah, I got the best deal. Let us go and start the journey with them. या coaching classes owner, anybody, right? So they want to know who is very fair. तो सबसे पहला प्री कंडीशन होता है, कीप अ गुड हार्ट,
राइट देयर मतलब जब आप एक अच्छे बी ए गुड नेगोशिएटर एंड डू विद अ गुड हार्ट, यू शुड फील फ्रॉम द हार्ट। जब नॉर्मली हम लोग हार्ट टू हार्ट टॉक या कन्वर्सेशन नहीं करते, वो पता चलता है बातों से, राइट। एंड यू स्टार्ट साउंडिंग कैलकुलेटिव और मैनिपुलेटिव। नॉर्मली होता है ना कि यार मेरे को आई वांट टू क्रैक द आई वांट टू ग्रैब द बेस्ट मीट ऑफ द आउट ऑफ द बोन, राइट। मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा मुझे होना चाहिए। समटाइम्स ये साउंड कैलकुलेटिव, सामने वालों को पता चल जाता है, आप बोलो ना बोलो सामने वालों को पता चल जाता है। तो आपके आचरण में आप जब डिस्कस करते हो लोगों के साथ, ट्राई टू डू विद ओपन हार्ट, थिंक कि उसका ही भला हो आपका ही भला हो, ट्राई टू, ये सबसे बड़ा रूल है, right? I'm telling you the process, right? ये आपके हिसाब से you can modify it or not, but this is what the best way to do that. You don't try to sound calculative, बनिए का दिमाग में चलेगा, right? So try to be with a good heart. Second, कभी कभी होता है कि you have to let go of the deal also. Sometimes I sit with the institution owner, या और लगता है कि यार ये डील कहीं जाने रहा है, तो sometimes we say कि I think so we'll get back to you. Try to be very polite when you try to have an exit strategy. I will tell you that also, right? तो कभी कभी रिश्ते बड़े होते हैं, right? You have to let that money factor go away, but try to build the relationship is very very important, right? So as far as you win the relationship, so अगर डील हुआ नहीं हुआ, that's fine, but as far as you try to win the relationship with a person, इसमें क्या हो जाएगा, you will have, you don't know कि क्या opportunities they will call you back also. For example, we were discussing with one of the institution owners, वहाँ पे हमारा शायद तालमेल नहीं हुआ, या we could not crack the deal in terms of income or revenue sharing. Normally revenue sharing के लिए हम लोग करते हैं, या कैसे opportunity, I will tell you कि हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं. So ultimately it didn't crack, we couldn't crack the deal, but they are always in touch with us whenever a new opportunity comes. तो relationships बनाना संजोना बहुत जरूरी है, is very very important. You win the heart, maintain your sanity and maintain your feasibility and viability. That's what negotiation. Win the hearts first, right? और at the same time maintain your feasibility also. ऐसा नहीं हो जाए कि यार मैं कंगाल हो रहा हूँ और सामने वाले को मैं सारा डील क्रैक करके दे रहा हूँ. That is not negotiation. Effective negotiation. So win-win deal. कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. And how you can be a negotiator like a pro, like a professional. Let's understand the framework जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंड कि सबसे पहला स्टेप क्या है नेगोशिएशन के लिए. नेगोशिएशन का सबसे पहला है कि यू शुड नो द प्रोस्पेक्ट, किसके पास मुझे जाना है. नॉर्मली आई गो थ्रू, या तो रेफरल्स के थ्रू जाता था, या तो आई शुड डू वॉक इन, राइट, टू इंटरनेशनल स्कूल्स में हम जाते थे. समटाइम मैं स्टाफ यूज्ड टू गो, मोस्ट प्रोबब्ली आई यूज्ड टू गो टू मीट पीपल. ये आप सबका तरीका अलग अलग हो सकता है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये फ्रेमवर्क आपके लिए ही डिजाइन होगा या सही होगा. सबसे पहले है प्रिपेयर फॉर द नेगोशिएशन. प्रिपेयर व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, राइट. कुछ लोग रैंडमली बात करते हैं, राइट, दे स्टार्ट टॉकिंग रैंडमली, कुछ भी बात करना शुरू करते हैं. जैसे कोई वॉर में जीतना है तो उससे पहले प्रिपरेशन, बैटल के लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल. इसका मतलब क्या हो सकता है, डू द रिसर्च अबाउट द इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में आपको समझो. रैंडम मेरा मीट है, शेड्यूल है, फॉर एग्जांपल मंडे, वन ऑफ द लीडर्स कॉल्ड मी एंड सेड कि आई हैव ए मीट विद वन ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल्स, मैं क्या करूं उसके लिए. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट. उनका क्या क्या स्टार्ट चेकिंग द फैक्ट्स, हुज द ट्रस्टीज कौन है, कहाँ कहाँ स्कूल्स है, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चलाते हैं, क्या स्कोप है आपके पास, कौन से काइंड ऑफ लोकेलिटीज है उसके आसपास, किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे. तो आपका हर एक के लिए प्रिपरेशन अलग अलग होगा, राइट. सो एंड या अनीश, one small thing. You said you used to walk in. So are you talking about cold calls? Just cold walk-in? So walk-in का मतलब है, yeah, sometimes walk-ins and sometimes by referrals. Cold calls, yeah, random walk-ins करते थे. I should take appointment. Because my experience is getting the appointment is like very difficult. आपको प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, इन लोग का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है. They're always busy. Very true, very true. 10 out of 2 deals ही उसमें क्रैक होते हैं walk-ins में, but you have to go out, right? आपको जाना पड़ेगा, right? अगर आपको बड़े डील्स क्रैक करने हैं तो आपको लाखों के इनकम ऐसे नहीं मिलते हैं, राइट. यू राइट कि वो प्रिंसिपल का उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है कभी कभी. आप घंटों बाहर बैठ जाएंगे, बैठा हुई हूँ मैं, राइट, विद माय स्टाफ एंड माय टीम आल्सो साइड ऑन, बट कभी कभी वो इतना फ्रूटफुल होता है कि यू स्ट्राइक एक डील. व्हाट आई डू, आई गो थ्रू अ रेफरल, right, so at least I get an appointment. But it's a very important to talk to the man का मतलब है not gender wise, money, authority, need, जिसके पास एक decision making power है, उसके साथ आपको मिलना है,
राइट. आई अंडरस्टैंड कि मिलना मुश्किल है, बट व्हाट आई शुड डू, आई टू रैंडमली वॉक इन, आई टू मीट. आपके जो फ्रंट एंड लोग होते हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए. पहली बार जाऊंगा मैं, सेकंड बार जाऊंगा, आई माइट गो एज ए जस्ट प्रपोजिंग समथिंग, बिजनेस प्रपोजिशन है. ऐसे याद रखिएगा. फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल, आपको लगता होगा मैं पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग आल्सो. अगर see you go as a person, come prepared, right? I used to keep a visiting card, I used to keep a diary, I used to keep a laptop ready, and I used to go like a professional. And हम लोग जाते थे business proposal के लिए. Trust me, when I did the conversation with the operations manager there in the school, she came out here, she gave me all the amenities what I wanted. And she was very much interested in business proposal. आप ये business proposal लेके जा रहे हो जहाँ पे schools को revenue मिल रहा है. Every schools have target now. The institutions have target now to generate more revenue. तो आप business proposal लेके जा रहे हो. कहीं पे they will not allow you to talk. Some schools don't allow you also, right? Faculty वो भी होता है. But some people are interested in that. Montessori schools में जाइए ना. They have space. They want to do. They allow professionals like us, right? ठीक है. तो just coming to the part. चेक योर ऑफर बाउंड्रीज. तो प्रिपरेशन का मतलब है चेक योर ऑफर बाउंड्रीज कितना. फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू ए टाई अप विद स्कूल एंड मैं हम लोग एनलाइटिंग माइंड्स जो प्रोग्राम था बच्चों का, उसके लिए 30,000 चार्ज कर देते. 35,000 रुपीज. आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट कॉस्ट. एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन को 35,000 में करते थे. एंड स्कूल को या तो हम लोग रेंटल इनकम देते थे मंथली. I used to pay rental income for some school of 20,000 rupees, right? या तो they will say कि मुझे 50% रेवेन्यू चाहिए हर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन के ऊपर, या 40% रेवेन्यू शेयरिंग चाहिए. वो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको उस पे आना है. चेक योर ऑफर बाउंड्रीज, राइट? अगर उनको देने के बाद मेरे बाकी सारे एक्सपेंसेस के बाद मेरे पास कितना बचेगा, मेरे लिए कितना फीजिबल होगा, ये सारी चीजें आपको पहले से ही बिफोर हैंड आपको तैयार करना है. वहां जाके आप डायरी पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकते, राइट? यू हैव टू डू दिस बिफोर हैंड कि आप क्या ऑफर कर रहे हो. जाहिर सी बात है you must be knowing what you're going to talk in front of the person. तो प्रिपरेशन माइंड में नहीं होना चाहिए. बहुत सारे लोग हैं ना माइंड में प्रिपरेशन करते हैं, मेरे को सब कुछ मालूम है. स्टार्ट राइटिंग ऑन योर डायरी. लिखो, लिखित में करो. स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट? एंड देन व्हेन यू गो देयर यू नो कि मुझे क्या बात करना है, राइट? तो सबसे पहले है तो ये पहला पार्ट है कि प्रिपरेशन कीजिएगा, राइट? अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जाहिर सी बात है कि आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है. एटलीस्ट प्रिपेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, व्हाट यू वांट टू टॉक, राइट? सो फर्स्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब सेकंड इज डू नॉट गो फर्स्ट. लोग अक्सर ये प्रॉब्लम करते हैं कि बोलना शुरू कर देते हैं, राइट? वर्बली दे स्टार्ट टॉकिंग, पहले. नेवर टॉक फर्स्ट. पहले सुनने का, राइट? स्टार्ट लिसनिंग टू, राइट? शायद बहुत सारे लोगों को बोलने की जल्दी होती है, वर्बल डायरिया. दे स्टार्ट टॉकिंग. तो फर्स्ट सबसे पहले तो पहले सुनने का. लेट द अदर पर्सन स्पीक. एक कहावत है, मैं आई वाज रीडिंग समवेयर कि द पर्सन हु स्पीक फर्स्ट लूजेस द डील. तो पहले सुनिएगा, यानी कि जस्ट आई नॉर्मली थ्रो ए क्वेश्चन. या सो हाउ आर यू सर, दैट इज डूइंग ग्रेट, सो यू कैन टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू आर ऑफरिंग. कुछ भी आप सवाल पूछ सकते हैं. लेट देम स्पीक. They will because you have to be prepared also ना. I also have to be mentally prepared कि मुझे डील कैसे जाएगा, राइट? चुपचाप बैठिएगा. Listen to them earnestly, patiently, right? And fully acknowledge what they said, right? Ask them questions, right? You randomly ask them question. Okay, is it like that? Okay, and what else? What else? क्या डील कर? Anything. Questions में कुछ भी हो सकता है randomly. So first listen to them intently, patiently, right? For example, उनको पूछ सकते हैं आप. So can you tell me more about what you're looking forward? No? What are looking from us? What services are you looking from us? Questions can be anything. Ask questions. ताकि or you can take a diary and pin it down. Okay, some pointers you can write it down, right? और सबसे पहला बात है कि always tell whenever they say something, right? जब भी वो कुछ बोलते हैं, never say that I agree. बोलेंगे यार तो आप जैसे बहुत लोग आते हैं, राइट? हमारे पास प्रोग्राम देखे जाते हैं, बट हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत कंप्लेंट्स आए. फॉर एग्जांपल, व्हेयर आई यूज्ड टू गो टू वन ऑफ द स्कूल्स, दे सेड कि शामक दावर यूज्ड टू कम, शामक दावर यूज्ड टू कम विद Shamak Dar used to come and do sessions in the same international school जहाँ पे हम लोग सेशन कंडक्ट करते थे, right? And he used to charge exorbitant 50,000 to 1 lakh used to charge. तो used to say कि my parents can't afford this, आप लोग इतना ले जाते. तो listen to them intently. Never acknowledge. मतलब never say I agree to what you say. Always say कि okay, I get you what you're saying. Okay, I get you what you're saying, right? Don't say I understand. तो हर चीज का तरीका होता है, right? तो सुन रहे हो आप and tell them कि I get you what you mean. मतलब I get you what you mean. I get what you were trying to say का मतलब I don't agree with you. इसका मतलब मैं तो आपसे agree नहीं करता हूँ, but आप क्या बोलना चाहते हो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, right? I get what you're saying, right? I can understand your position, right? That's the right language to say. तो ये सारी चीजें कुछ चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, right?
Then next is third is so let them talk first. Preparation, let them talk first. Then later on ask for permission to talk. राइट अभी आप परमिशन ले सकते हो उनसे कि पूछने के लिए. सो कैन आई हैव कैन आई आस्क यू समथिंग वेरी प्लेनली, कैन आई बी ऑनेस्ट विद यू, राइट? आई जस्ट कैन आई आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग वेरी ओपनली विद यू, मे आई हैव द परमिशन. नॉर्मली क्या होता है ना, व्हेन यू सिट विद फॉर अ नेगोशिएशन पार्ट, सामने वाला इज हैज अ वेरी क्लोज एंडेड गेस्चर, राइट? अपने फोल्डर ही डजंट वांट द अदर पर्सन टू इंट्रूड इन हिज टेरिटरी. तो वो ज्यादा ओपन अप होने की कोशिश नहीं करेगा. वो सोचेगा ये जल्दी से डिस्कशन मीटिंग खत्म हो जाए, ये बंदा चला जाए. तो ट्राई टू आस्क फॉर परमिशन to intrude into his territory. तो permission पूछेगा, ask सवाल, right? Ask the right questions, throw up questions to him, right? But at the same time, be very polite, be very gentle, and be very kind, right? ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा in negotiation, right? Can I ask you something which might require you to open to look at things from my perspective? चलेगा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं कुछ व्यू शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. Are you okay with that? Ask for permission with that, right? You can do the same thing with your employees, vendor, supply chain, anything, right? So negotiate with love. Ask them questions, right? सवाल पूछो. They will start talking. 60% तो वही बात करेंगे आपसे. तो you are mentally prepared कि उसको exactly चाहिए क्या. वो सारे pointers को आप deal कर सकते हो step by step, right? सो अभी तक आपने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, राइट? 15 से 20 मिनट केवल आपने प्रिपरेशन किया, उसको बात करने दिया, क्वेश्चंस पूछा और वही बात कर रहा है. 15-20 मिनट आपने सुना. नाउ आपकी बारी आ रही है, चलिए मैं अभी अपना नेगोशिएशन शुरू करता हूँ, राइट? तो 15 से 20 मिनट एनालिसिस किया आपने, एंड देन यू स्टार्ट योर वेपनरी ऑफ नेगोशिएशन, राइट? तो चौथा स्टेप आता है शेयर योर आस्क. आप अभी अपना आस्क बताएंगे, मुझे क्या चाहिए आपसे, and give the logical reasoning, मुझे क्यों चाहिए सारी चीजें. I will tell you what logical reasoning क्या है. For example, normally मैं पूछता हूँ, I ask them कि मुझे पूरा पोडियम चाहिए आपका, और I want you to do the entire marketing for me. आपके पास 1 लाख स्टूडेंट्स है आपके इंटरनेशनल स्कूल में, मुझे सबके पेरेंट्स के नंबर और एक्सेस चाहिए, राइट? या मुझे ये पूरा पोडियम चाहिए, मुझे स्पीकर्स चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, मुझे माइक चाहिए, everything I want on a Sunday, right? And I want your staff also to be there. This is my ask whenever I go and sit with a institution owner. ये मैं बहुत valiantly बोलता हूँ उनको, right? I ask them this, right? And I ask them, I give them logical reasoning also. ये मुझे क्यों चाहिए? Because I invite मेरे साथ parents अक्सर आते हैं Sundays को, right? So I have around, normally when me or Imran ji we go together and conduct such international school sessions conduct करते हैं. These are high ticket programs, right? We used to do this for 30-35,000, right, per registration. And then वहाँ पे दिस इज सिक्योर प्रेमाइसेस है, बच्चे होते हैं वहाँ पे, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए एक अलग से कियोस्क बनता है, राइट? उनके रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा. अगर मैं और इमरान जी प्रेजेंटेशन देंगे स्कूल्स में, तो मुझे प्रोजेक्टर लगेगा, मॉनिटर लगेगा, स्पीकर्स लगेंगे मुझे, राइट? एसी लगेगा मुझे, पंखा लगेगा, जो भी है, चेयर लगेंगे. आई वांट समबडी टू सर्व टी और कॉफी और वाटर फॉर देम. तो इसका प्रोविजन मुझे स्कूल से मैं बोलूंगा, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, एंड व्हाई आई वांट दिस, राइट? तो ये सारी चीजें आपको क्यों देना है, इसका पहले से आपको प्रिपरेशन पार्ट में आता है, फर्स्ट पार्ट में आता है. यू कैन नाउ यू स्टार्ट शेयरिंग योर आस्क in tandem to what all he has said to you. अभी तक उसने क्या क्या बोला, उसके पास्ट एक्सपीरियंस उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये सारे आस्क पूछना है, and give your logical reasoning for that, right? Right? So तो आपको ये सबसे पहले तो ये सारी चीजें करेंगे आप, राइट? उनको पूरा क्लैरिटी दीजिए, लॉजिकल रीजनिंग दीजिए, राइट? एंड बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आस्किंग क्वेश्चंस. डोंट गो इनटू एनी आर्गुमेंट विद देम, राइट? कि ऐसा हो गया. डोंट गो इनटू ए पॉलिटिकल डिस्कशन, या डोंट ट्राई टू बी इनटू आर्गुमेंट कि आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ. हर एक, अगर वो कुछ चीज बोल रहा है कि अरे आप योर प्राइस इज इन्फ्लेटेड, अरे पेरेंट्स ऐसा अफोर्ड नहीं करेंगे, या कुछ भी, एनी क्वेश्चंस, राइट? अरे आपका सर्विस नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ट्राई टू जस्टिफाई योर व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू से विद पॉइंटर्स और विद लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस. आपको सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट उनको बताना है. डोंट फॉल इनटू एनी आर्गुमेंट व्हेन यू आर डूइंग डिस्कशंस, राइट? तो चौथा स्टेप है आप शेयर योर आस्क विद लॉजिकल रीजनिंग. फिफ्थ इज एक्ट डम, राइट? सो एक्ट डम का मतलब ये है कि बी क्वाइट, जस्ट ट्राई टू एक्ट स्टूपिड, राइट? और ट्राई टू एक्ट कि यार मुझे मालूम नहीं कुछ भी, राइट? सो फॉर एग्जांपल ही सेज can you come back to me what you're trying to say? Can you come back to me why you want to quote this price? Or can we can I come to this point कि आपको क्यों लगता है कि इतना परसेंटेज शेयर होना चाहिए? I can't understand. तो can you please elaborate on that? क्यों आपको लगता है कि इतना प्राइस फैक्टर से आप ज्यादा नहीं जा सकते? Can we come to the least what you can live with?
ये सारे आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं. Normally I say this. So I think so 40% is a fair deal, sir, for you. What do you think? Can I get back to, मतलब can I ask you something, you know, why you are saying this? Try to act dumb, right? Don't try to be extra smart or extra shana, right? Normally हम लोग करते हैं कि यार मैं बहुत सही हूँ यार, मुझे सब कुछ मालूम है, right? And people try to, you know, share, you know, snatch the deal from you. So try to ask these questions, try to act dumb का मतलब है try to ask this question. I think 40% the best deal I can give it to you, right? मैं समझा नहीं आप ये क्यों बोल रहे हैं. What best you can live with, you know, what best you can live with. क्या प्राइस आपको लगता है, क्यों 70 आपको क्यों 60% चाहिए, right? Because the entire service is given by me and my staff. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? आई एम गिविंग यू 50% और 40% ऑफ द डील, राइट? सो दैट इज अ वेरी गुड डील. उनको कैलकुलेशन के साथ दे सकते हो, राइट? छठा है गो फॉर द ऑफर, द लास्ट वन, राइट? नाउ यू कैन डायरेक्टली गिव द ऑफर द पर्सन. आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो कि क्या ऑफर है आपका, ब्रोशर्स, प्रोडक्ट्स, प्रेजेंटेशन. नॉर्मली आई गो विद अ प्रेजेंटेशन, आई गिव द प्रेजेंटेशन टू देम कि व्हाट आई एम यू नो गोइंग टू गिव देम, क्या प्रोडक्ट्स में क्या क्या होगा, मेरे प्रेजेंटेशन में क्या होगा, कहाँ कहाँ मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, and then I try to offer the deal for them. Normally I try to give them 40% deal, sometimes 50% deals. Try to give them the best deal. ऐसा ना हो जाए कि he is losing or you are only winning. वो feeling नहीं आनी चाहिए. When you are, sometimes ऐसा भी हुआ कि मैंने 60% of price factor, revenue sharing में मैंने close किया deal. I've done that. But in the long run मुझे law of averages से मुझे बहुत फायदा हुआ है. For example, school is giving me 60 students into, समझो for example I am getting 30,000, if I am getting 15,000 also, yeah, I am getting जो भी है 15,000 भी अगर मुझे मिल रहा है, right? 100 students में 15,000 मिल रहा है, it's a fair deal for me in a month or two, right? So try to see कि क्या आपका कितना स्टेक है. और अगर स्कूल आपका मार्केटिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्कूल्स खुद अपने चैनल से मार्केटिंग करते थे, अपने अपने ऐप से ही पेरेंट्स को इनवाइट करते थे. तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट? पेरेंट्स यूज्ड टू डायरेक्टली कॉल अस कि आपका प्रोग्राम है, मुझे अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना है. तो देयर वाज हार्डली एनी एफर्ट विच टू गो फ्रॉम माय एंड, राइट? तो इस तरीके से आपको पहले से मैकेनिज्म सेट करवाना है. आई हैव टू सेट द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग, सेल्स, एवरीथिंग. सब कुछ मैंने उनसे ले लिया था. लिटरली हमने पूरे स्कूल को बंधक बना दिया था एक तरीके से संडे को, बिकॉज द एंटायर स्कूल वाज गुरु स्कूल्स ऑन अ संडे. तो इस तरीके से आप यू कैन आस्क एंड इट इज गिवन टू यू. सो जब ऑफर के लिए बैठते हैं, you have to be very clear कि you have to sign, ensure that आपने क्या क्या स्कूल से मांगा है, इंस्टीट्यूशन से मांगा है, वो सारे आप लिखित में ले लो. I used to always do this, right? On a Gmail, on a mail, or at least on a letterhead, we used to give them, take their acknowledgement कि ये सारी चीजें A to Z, मुझे ये सारी चीजें चाहिए आपसे, ये सारे सपोर्ट चाहिए आपसे, और हम लोग क्या क्या चीजें what all we will be, जैसे क्लॉज, एक तरीके से क्लॉज साइन करना है कि हम लोग इंटीग्रिटी रखेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, राइट? विल टेक केयर ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस, कोई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करेंगे, इट इज अप टू अस. तो ये सारी चीजें क्लॉजेस बिटवीन यू एंड द एक तरीके से द स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एनीबडी. तो ये आपको तैयार करना है, राइट? एंड राइट, सो दैट इज हाउ इट गोस. इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल recently we had one of the leaders introducing us to a coaching classes. So coaching classes, it was not a coaching classes, it was basically for IITG preparation students. So they were very impressed with the offering what we were giving. So every time, whenever once in a quarter, he invites us to speak to his audiences, to speak to the parents for the counseling part, right? And he's doing the marketing for us. So I'm just giving you avenues. Prerna, can you just elaborate the question? I didn't get you. Actually, my question is, if we are going somewhere in school or colleges, if they are inviting us to take one career guidance seminar, so how much should we take near about? See, the career guidance seminar का presentation अलग हो जाता है. वो आप you can charge any price, you can charge 3,000, 5,000. But I'm talking about introduction sessions. अगर आप कर रहे हो तो you can do it free of cost, ना? Because you're going to ultimately take up into registrations. You are urging parents to register for counseling for the kids, for the students, right? I'm talking about introduction presentations. अगर आपको school invite कर रहा है to about career counseling, there's different thing altogether. That is, you can charge, normally we charge around 3,000 to 5,000. That is up to you, right? Depending on you. So we are not talking about that. We are talking about how you can strike a deal with, आप कैसे deal strike कर सकते हैं with the institution. कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, राइट?
So recently we had one of the HRs collaborating with us. So she met us formally, right? When we had promoted हमने उसको promotion किया था, and she had a few other vendors. तो उनके साथ बहुत सारे vendors थे, और उन्होंने हमको चुना। तो हमने उनको ऑफर दिया कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस का उनके एम्प्लॉइज के लिए हम लोग साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे और इमोशनल इंटेलिजेंस करेंगे उनके एम्प्लॉइज के लिए, राइट? तो वी हैड अ वेरी फेयर डिस्कशन एंड वी ट्राई टू गिव द बेस्ट डील फॉर देम। वी ट्राई टू एनालाइज कि बाकी ऑफरिंग्स क्या आ रहा है उनको और हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट? वी ट्राई टू हमारा पिच हमने उस तरीके से मॉडिफाई किया। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपका कन्वर्सेशन कैसे जा रहा है, यू कैन ट्राई टू मॉडिफाई योर कन्वर्सेशन ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं कि फ्यू पॉइंटर्स फॉर नेगोशिएशन, राइट? नेगोशिएट विद द पर्सन हु हैज द फाइनल अथॉरिटी। नॉर्मली हम लोग अक्सर नेगोशिएशन किसके साथ भी कर लेते हैं। आई यूज्ड टू डू दैट अर्लियर। आई यूज्ड टू डू नेगोशिएशन विद द पर्सन हु हैज नो अथॉरिटी, बट ही यूज्ड टू सिट विद यू, राइट, विद लॉट ऑफ इंटेंट कि यार मैं बता दूंगा अपने सीनियर्स को, राइट? बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ही और शी डजंट हैव अथॉरिटी, और जब तक वो बता देगा सीनियर्स को बहुत समय चला जाता है एंड इट डजंट टेक एनी एक्शन। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपको थोड़ा सा रेकी करना पड़ेगा वहां पे, राइट? जो मनी, अथॉरिटी, नीड जिसके पास है, अक्सर वो प्रिंसिपल्स होते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल्स के पास भी अथॉरिटी नहीं होता है, राइट? ओके, सेकंड इज या तो इफ यू, एक कहावत, इफ यू आरंट डीलिंग विद द राइट पर्सन you will be subject to constant frustration। क्या होता है, अक्सर लोग जाते हैं डील्स के लिए। I've seen a lot of people initially going and then they stop going to institute and trying to do a deals or negotiation or tie-ups, right? Because they're talking to the wrong person constantly, right? तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार लगातार। आप I refuse to talk to any other person. I should talk only to the trustees। एक बार तो ऐसा हो गया था कि one of the trustees whom I was dealing with agreed to do my enlightening minds program with the school curriculum। तो उन्होंने कहा कि why can't we do this कि हम लोग स्कूल करिकुलम में इसको इंक्लूड करें, यानी कि पेरेंट्स एडमिशन में लेंगे तो इसी प्रोग्राम्स को साथ में हम लोग भेज देंगे क्लब करके। सी हाउ यू कैन बी क्रिएटिव ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो बी वेरी क्रिएटिव इन योर परस्यूट्स व्हेन यू आर डूइंग अ टाई अप, व्हेन यू आर डूइंग अ टाई अप विद इंस्टीट्यूशंस। सो ये कहीं पे भी चलेगा ये सारी चीजें। यू हैव टू बी ऑल्सो वेरी क्रिएटिव इन योर परस्यूट्स। यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कभी कभी आपको आइडियाज वहीं पे आ जाएंगे ऑन द टेबल, राइट? सेकंड is always leave yourself a way out or exit strategy। जरूरी नहीं कि सारे negotiations और deals आपके लिए definitely काम करें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, right? So you also have to keep an exit clause। So whenever I should do a deal or negotiation with the institution, I used to always take a written clause, but I should keep a small exit strategy there। Sometimes things don't work out, right? So you cannot, आप हमेशा के लिए उनके साथ tie up नहीं रख सकते, right? So always keep a way out कि ये नहीं हुआ तो we can also look for other opportunities, or we can rethink about this relationship, something like that, of this association, right? तो ये एक way out और exit strategy हमेशा रखिएगा आपके क्लॉज में, राइट? सबसे पहले तो नेगोशिएशन और डील क्रैक हो जाए, बट ऑलवेज कीप एग्जिट स्ट्रेटजी। कभी कभी इन द नेगोशिएशन जो हम लोग कर रहे हैं, राइट, आई एम टॉकिंग टू ओवर द काउंटर विद द पर्सन, समटाइम्स आई फील यार नहीं यार ये दिस इज नॉट फॉर मी, so I politely I exit from the negotiation or deal very politely, right? So you should not relationships को आप खराब नहीं करना है। ये दो चीज बहुत जरूरी है when you do that, right? or else क्या हो जाएगा, you will be in a lose win situation, you'll keep on losing things and your energy and everything। See, try to put your energy जहाँ पे you are getting a win-win deal or more a win-win deal for yourself, to be more try to get a more win-win deal। but अगर ऐसा हुआ तो try to थोड़ा exit कर लीजिएगा उस strategy से। few tips, राइट? स्लो थिंग्स डाउन इन नेगोशिएशन। बहुत फास्ट और जल्दी नहीं जाना है, राइट? सामने वाले को आराम से, इट्स नॉट अ मैराथन, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। सो स्लो थिंग्स डाउन योर कन्वर्सेशन। स्पीक लेस एंड लिसन मोर। ये मैं हमेशा कहता हूँ, राइट? ट्राई टू हैव मोर लिसनिंग स्किल्स। लिसन मोर, सुनिएगा ज्यादा। हमें बोलने की ज्यादा आदत है, वी आर ट्रेनर्स, राइट? सो स्पीक लेस, लिसन मोर, go last, right? He or she who speaks first loses। Never make the other guy feel like he's lost। Try to make him understand कि exactly मेरा concept क्या है, कैसे आपको help होगा। Make it very simpler, don't make it very complex। It's a series of steps। ये जैसे मैंने आपको बताया, preparation, right? Then listen, then उसके बाद ask permission। ये सारे steps है negotiation के। Be very respectful and polite। Trust me, he will remember you for lifetime। He will recommend you 10 other places। That's how you can scale it up to the next level। Try to be very respectful and polite when you're in a conversation। भले वो workout करे नहीं workout करे, don't be manipulative, don't be calculative। That's the least what you can do। अगर आप थोड़ा सा manipulative calculator होगे, सामने वाले को दिखेगा। I used to do with a lot of negotiation people, but I see that the other person is very calculative, so we don't go ahead, right? वो
हम दिखाते नहीं, बट वो सेम टाइम मजा नहीं आता वो करने के लिए, राइट? तो जब आपको मजा नहीं आता तो सामने वाले के साथ भी मत कीजिएगा ये, राइट? बी क्रिएटिव, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन, right? Six actually works. Prerna says absolutely, six actually works when you do a conversation with a good heart. सबसे important चीज है, half the trick works there, right? When you do a conversation with a very open heart and a very good heart, कि सामने वालों को ज्यादा मुनाफा हो या उनको फायदा हो, उस लिहाज से जाइएगा. Be creative and think out of the box as per situation. It's very important. Be very creative. जैसे मैंने बताया ना कि आपके करिकुलम में क्यों नहीं ऐड करते इस प्रोग्राम को, अभी तक वो बात नहीं हुई. I'm telling you the work, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. And तो they agreed to, the trustee agreed to me, but somehow COVID came and then I could not pursue therefore. I might be going in a couple of months back to the international school, right? Just imagine कीजिए अगर वो हो गया तो I don't have to do anything. The school will generate the income for me. I'm trying to मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ जो एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं. I'm not telling you any theoretical thing, right? It's all practically thing what we have done till now. Always come prepared. Preparation is the key. Half the people don't come prepared. They just go randomly and sit and they get lost. ऐसा भी चलेगा कि अगर आपको लग रहा है कि in the midst of the negotiation table, अगर आपको लग रहा है कि you don't have the answers, it's okay. You can tell them कि I can get back to you. चलेगा वो चीज भी also, right? You can tell them कि I will get back to you, sir. Tomorrow can I meet you? I'll come with the answers. It's okay, but don't say anything random in front of the the person. Come with a solution. Next day you can come and sit, or next week you can come and sit, or next month you can come and sit and take the conversation further. Very very important, right? Come prepared का मतलब है come with your laptop, come with your, अगर हमारा गुरु स्कूल का डिजिटल कार्ड है वो लेके आ जाइएगा. अरे यहाँ पर विजिटिंग कार्ड नहीं है तो, राइट? और कैरी योर ओन डिजिटल कार्ड. कम प्रिपेयर विद द नोट्स, ब्रोशर्स है तो प्रिंट आउट्स लेके आइएगा. एनीथिंग, राइट? डोंट अज्यूम एनीथिंग, राइट? कि यार मेरे को तो मालूम है ऐसे ही होने वाला है, राइट? डोंट कम अज्यूम एनीथिंग. आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे सवाल पूछेगा. जब आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर आप जब दोगे तो इट विल कनेक्ट टू द पर्सन एंड दैट्स हाउ यू क्रैक द डील, राइट? आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सामने से उसको बोलने दो. कीप ऑन ट्राइंग, डोंट गिव अप. मेनी पीपल गिव अप कि मैंने 2 इंस्टीट्यूट से बात कर लिया एंड कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में. दे गिव अप, राइट? Trust me, I have walked up to 20 international schools and I got deals cracked in 2 schools only. आधे कहीं से पता entertain भी नहीं किया हमको. I'm telling you very frankly, right? So keep on trying. You have to keep on trying. और ये आपको next level success देने वाला है, right? तो ये these are steps जो and ask for you want. Ask for what you want. जैसे मैं बताता ना, जब मैं deal एक बार crack हो गया, I asked Sky from them. मुझे ये सारा support चाहिए आपसे. They used to give me, right? So this is certain point जो हमने बनाया है, लिस्ट डाउन किया है, जो आई एम श्योर, आई होप सो आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे व्हेन यू गोइंग फॉर अ डील, राइट? ये ब्लूप्रिंट है, कह सकते हैं उसको, जो आप फॉलो कर सकते हैं. Sir, I have one doubt. Yeah. This is Saurav. Sir, suppose we crack the deal with any institution. So is it compulsory that we get the deal, like in a written format or some kind of agreement or affidavit? I will tell you why. ठीक है? नहीं, कंपलसरी नहीं है. देखो, कोई चीज कंपलसरी नहीं है. मैं करता हूँ, मैंने कहा आपको, राइट? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, I'll tell you what happened one day. क्यों बाद में फिर मुकर जाएंगे तो Absolutely. एक बार क्या हो गया था कि I was doing a session, right, for parents. There are at least 20 parents turned up. और पता चला सेशन में उन्होंने मुझे प्रोजेक्टर ही प्रोवाइड नहीं किया, कुर्सियां नहीं थी वहां पे. तो मुझे बाद में जब मैंने कॉल किया ओनर को, द ऑपरेशंस हेड को, उन्होंने बताया कि यार अभिलाष, हमारा कोई एनुअल फंक्शन है तो वहां पे सारी कुर्सियां जा चुकी है. तो मैंने उनको याद दिलाया कि देखिए, मैंने आपको एक क्लॉज में लिखा हुआ, मुझे सारी चीजें मुझे विद इन 1 आवर चाहिए. आई वांट दिस विद इन 1 आवर, राइट? बिकॉज ये सारे क्लॉज में है. आई कैन नॉट आस्क माय पेरेंट्स, आई कैन नॉट अरेंज दिस ऑल ऑफ अ सडन, राइट? ऑन अ संडे यू आर टेलिंग मी. Obviously, I told you very politely in a friendly banter. मतलब obviously I cannot be rude with them. मैंने बोला, आपको मैंने बताया मुझे 1 घंटे में चाहिए. I cannot arrange this all of a sudden. ये मेरे क्लॉज में मेंशन्ड है. आप मुझे कुर्सियां प्रोवाइड नहीं कर रहे, प्रोजेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मुझे माइक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. This is not how it is done, right? We are meant to. ये मैं क्लॉज में, then all within half an hour everything was arranged for me. आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? Where I am coming from, right? Yeah. Yes, sir. Yeah. Mr. Abhilash, may I ask you one question? Yeah. I'm Chad. See, when what is the best way to approach? Is it through email or face-to-face meeting? First, getting the appointment. Please tell me that. What is the best approach or the right approach? The best is not email nowadays. Nobody sees, and views email. Even आपको 10 email आ जाएंगे, उसमें से I think so you will see only 1 or 2 emails, right? तो आपको सबसे बेस्ट है go with a referral. सबसे बेस्ट पार्ट हमेशा वर्क करता है, right? या सेकंड पार्ट इज walk in.
और जब वॉक इन भी जाओगे, यू गो एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर ओनर, like boss of the house, right? And you go and meet the concerned person, meet face to face. That's the best way to crack the deal. कुछ ना कुछ तो डील आप क्रैक करके आओगे, ट्रस्ट मी विद दिस पार्ट. पर कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ और दे डिडंट एंटरटेन अस ओनली, बोले नहीं नहीं वी आर नॉट एंटरटेनिंग, हमारा इन हाउस ट्रेनिंग्स है या हमारे इन हाउस ही सब कुछ हो रहा है. होता है, ऐसा भी होता है. तो फेस टू फेस मीटिंग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. Hello, I also have one question. When I approach any school or some coaching institute, they, especially the schools, they say कि I think CBSE school or something. So they say we already have counselors, like we have a school counselor and all that. So we don't need the counseling services. So then how to go about? Most of the schools have counselors nowadays. I will come to that part. Okay, Divya, the answer to your question is very good question you asked me. अभी से एक चीज याद रखिएगा, there are two kind of counselors in schools, right? एक काउंसलर होता है behavioral counselor. दिव्या, behavioral counselor का मतलब है whenever the child shows some negative traits, right? कि बच्चा ने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जो बहुत कंसर्निंग है, या समटाइम्स सम कुछ ऐसे कुछ हार्श वर्ड या रूड वर्ड, कुछ ऐसे यू नो एक्सप्लिसिट वर्ड्स बच्चे ने कह दिया, तो क्या होता है ना, स्कूल अथॉरिटीज डिस्क्रीटली एस्कॉर्ट द चाइल्ड टू ए बिहेवियरल काउंसलर. तो आप जो कर रहे हैं दैट इज साइकोमेट्रिक एनालिसिस काउंसलर. तो स्कूल के पास आप जाते हो, काउंसलर बोलोगे, ए जेनरिक वर्ड, दे माइट मिस्टेक इट फॉर ए यू नो फॉर इट बीइंग ए बिहेवियरल काउंसलर. बिहेवियरल काउंसलर का केवल एक ही दायित्व, एक काम होता है कि काउंसल द चाइल्ड सेपरेटली, राइट? कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मसले हो रहे हैं, शायद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके भाषा में, राइट? तो उसके लिए काउंसल करता है. तो बिहेवियरल काउंसलर अलग होता है. हाँ, एडमिशन काउंसलर भी अलग होता है, जहाँ पे द काउंसलर सिट्स वन ऑन वन विद पेरेंट्स एंड टेल देम अबाउट द सब्जेक्ट्स पार्ट, द एडमिशन पार्ट, वो भी अलग होता है. देयर आर टू काइंड ऑफ काउंसलर्स, मैंने बताया आपको, बिहेवियरल काउंसलर्स एंड एडमिशन काउंसलर्स. आप जो कर रहे हैं, पहले आपको बताना पड़ेगा. जेनरिक टर्म आप काउंसलर बोलोगे ना, so they will not come to know. So you have to tell them कि I'm a psychometric analysis counselor. Let me explain what it is all about. Then tell about the pros and cons. कि 8 intelligences होते हैं, कैसे उसका बच्चों का SWOT analysis होगा, learning styles कैसे पता चलेगा, कैसे ये काउंसलिंग हेल्प करेगा स्कूल के प्रोडक्टिविटी में, कैसे बच्चों का लर्निंग स्टाइल बेहतर हो सकता है, कैसे टीचर्स कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट ट्रेट्स एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड. तो आप काउंसलिंग बोलोगे, दिस वेरी जेनरिक टर्म, right? You have to explain what you're doing, right? तो इसलिए मैंने बोला ना कि you have to be very clear what you're telling them, right? I hope I answered your query. Fine. Yeah, thank you very much. Over to Imran ji. Yeah. Okay, great. Thank you so much, Abhilash. So, leaders, I hope you got some clarity about the negotiation and how to crack deals. You know, so now Abhilash ji has shared his view. Now I will go to share my view, my secret, how I close the deal with schools and institutions, how I be a part of many institutions, how I be a trainer of second year or third year institutions or schools or colleges. तो मैंने कैसे किया, ये पूरा एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा. और ये पूरा रिसर्च है, मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. मे बी इट विल डिफर फ्रॉम यू, बट आई विल गो टू शेयर ऑल माय सीक्रेट्स. जैसे मुझे सक्सेस मिला है स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के साथ में. मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी सेशंस लिए हैं. इट कैन बी मुंबई यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. तो मैंने काफी यूनिवर्सिटीज में भी सेशंस लिए हैं. नाउ डेज आई एम इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टेकिंग सेशंस फॉर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. ये सारी चीजें कैसे हुई, कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे मैंने अप्रोच किया स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, आई विल गो टू शेयर एवरीथिंग विद यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाउ विल गो टू सेल टू स्कूल्स. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो फैक्ट एक्चुअली वर्क करते हैं, काम करते हैं. तो व्हाट आर दोस फैक्ट्स जो आपको भी ध्यान रखना है व्हेनेवर यू गो टू अप्रोच स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो सबसे पहली चीज जो फैक्ट के अंदर आती है, जो काफी अभिलाष ने भी शेयर कर दिया, व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू अगेन, मेक श्योर यू आर सिटिंग विद अ डिसीजन मेकर और डिसीजन मेकर्स. स्कूल्स में कभी कभी ऐसा होता है, देयर इज नो वन सिंगल पर्सन हु इज अ डिसीजन मेकर हु हैज द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन. इट कैन बी मल्टीपल पीपल, इट कैन बी 2 or 3. So you make sure that decision makers are involved in your presentation. वरना क्या होगा, आपने अपना बेस्ट दिया प्रेजेंटेशन में, they will say we will come back to you because at the end of the day principal makes the decision and principal was not there in your presentation. तो क्या हो गया, आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन, आपने अपना बेस्ट दिया, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन मेकर आपका डील नहीं हो पाया. नो, तो ऑलवेज मेक श्योर, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, काफी लोगों की डील मिस हो जाती है, वो डिसीजन मेकर्स के सामने नहीं बैठते. जैसे अभिलाष ने भी कहा, मैं हमेशा कहता हूं, आई यूज दिस टर्म मैन, MAN, मनी अथॉरिटी नीड होना चाहिए, तब जाकर आपकी डील क्रैक होगी, आपकी डील पूरी होगी. तो सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट व्हिच यू कीप इन माइंड,
Purchasing decision of schools are rarely made quickly, you know. अब बहुतों को लगता है कि आज मैं जाकर स्कूल में प्रेजेंटेशन दूंगा और कल मेरा डील क्लोज हो जाएगा. नो 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 नो, स्कूल इस तरह से काम नहीं करता. स्कूल स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट स्कूल्स, ये बहुत स्लो होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर. मैं आपको स्टेजेस भी बताऊंगा बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू मेनी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन. आई आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, अ कोर रोल इन इंस्टीट्यूशन. तो मुझे पता है कैसे वहां पे डिसीजन होते हैं. आई विल गो टू शेयर इन माय कमिंग स्लाइड. तो परचेजिंग डिसीजन ऑफ स्कूल्स आर वेरी वेरी स्लो, दे आर नॉट सो रैपिड, यू नो. तो हमको लगता है यार मैंने आज प्रेजेंटेशन देना है, कल मेरा डील क्लोज हो जाए. नो नो नो, ये ऐसे काम नहीं करता. एंड रिसर्च ऑल्सो से, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, 52% ऑफ द स्कूल 3 से 6 महीना मिनिमम, अगर उनको डील अच्छी भी लगी, आपके काउंसलिंग या आपके ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट उनको अच्छा भी लगा, दे विल एटलीस्ट टेक 3 to 6 months research stages, you know. 52% schools take minimum 3 to 6 months to take decision. अगर आपका डील एक महीने में या हफ्ते में हो जाता, that's great, you know. That school comes under 48%, so that's amazing. But normally, naturally, इस तरह से होता है, school takes time to take decision. और वो कैसे stages में decision लेते हैं will come in the coming slide. Let's go to interesting fact number 3. आप सोचते हैं कि आप स्कूल जाएंगे और आपका वो प्रेजेंटेशन सुनेंगे और वो आपके साथ में डील क्रैक कर लेंगे. नो नो नो, स्कूल परचेजिंग डिसीजन कैन हैपन वेल बिफोर द परचेज. वो आपको सुनने से पहले उन्होंने डिसीजन बना लिया है, उनको चाहिए क्या. दे हैव डेवलप्ड देयर नीड, दे नो देयर पेन पॉइंट, दे नो देयर व्हाट दे वांट, राइट. ये ऑलरेडी उनके सेकंड क्वार्टर में, जैसे मैंने कहा स्टेजेस वाइज में उनका काम होता है. ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर उनको क्या चाहिए. बट वो आपसे इसलिए मिल रहे हैं, दे वांट टू सी अल्टरनेटिव, दे वांट टू सी लॉ ऑफ कोटेशन, जहां पर उनको बेस्ट वैल्यू, बेस्ट सर्विस, बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिल जाए, वहां पे वो डील अपनी क्लोज कर देंगे. तो दे हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन इन देयर माइंड, यू नो. तो आप जा रहे हो अपना एक ट्रायल देने, सैंपल देने, दे हैव ऑलरेडी मेड देयर माइंड. एंड द फोर्थ इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, try to identify and understand the need of the school. It's very very important because you should know the pain point of schools, you know. उनका क्या चैलेंज है ये आपको पता होना चाहिए. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? There is a beautiful system in sales called SPENCO. SPENCO के अंदर जो S और P है वो है सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग. यू शुड डू सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग. जैसे विलास जी ने कहा, पहला पॉइंट प्रिपेयर. तो प्रिपेयर में ये आता है सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग. बिफोर गोइंग टू अप्रोच एनी इंस्टीट्यूशन, एनी स्कूल्स और एनी कोचिंग क्लासेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द स्कूल्स. उनको क्यों जरूरत है, वो आपकी काउंसलिंग क्यों लेंगे, वो आपकी ट्रेनिंग क्यों लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए. अभी आप मुझे पूछेंगे कि ये कैसे पता चले. सो दिस इज माय फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्टिंग फैक्ट. You should join or connect where they are, means where the teachers are, where these educators are, you need to join and connect with them, join in their conversation. अभी आप बोलोगे ये कहाँ मिलेंगे. So we are very lucky enough that in today's time internet is there, social media is there, so you can connect with them on social media, on Facebook. According to the research, most of the educators are on Facebook. You can connect their group, you can connect with them on personal on Facebook. अभी आप बोलोगे कि डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट कैसे होंगे. तो यू कैन कनेक्ट इफ यू नो देम, इफ यू डोंट नो देम यू कैन कनेक्ट वाया, यू नो, थ्रू समवन, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, you know, through someone, you know. So join and connect with them, which is very very important. So when you connect with them, when you join their conversation, you will come to know what their pain point, what's their challenges. You will be in a position to identify the needs, what schools are going through. तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी और इससे आपका जब अप्रोच होगा टू गो टू स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन, तो यू विल टॉक इन दैट पॉइंट ओनली. यू विल ओनली टॉक अबाउट द सर्विसेज, द वैल्यू, द सॉल्यूशन यू विल गोइंग टू प्रोवाइड टू देम. आप इधर उधर की बात नहीं करेंगे बिकॉज यू नो व्हाट इज देयर पेन पॉइंट. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है. whenever you go and approach or you want to sell to schools or any institution, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी. Now let's come to the stages point. तो स्टेजेस कुछ होते हैं स्कूल्स के डिसीजन मेकिंग के, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज वी आर हियर इन दिस सेशन टू लर्न हाउ टू अप्रोच टू स्कूल्स एंड हाउ टू क्रैक द डील एंड हाउ टू क्लोज द डील विद इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल्स. तो यहाँ पर स्कूल्स का जो बिहेवियर है, बाइंग साइकिल है, वो आपको पता होना चाहिए as an educator if you are going. And this is, let me tell you, this is a long process, you know. Or if you really want a big time ka deal, you know, one time you have to do lot of effort, you have to put lot of mehnat you have to do. एक बार डील क्रैक हो गया, आपका एक अच्छा खासा इनकम will come on a monthly, on a quarterly, on a yearly basis from schools or institutions.
बट एक बार मेहनत करना पड़ता है, बट वो मेहनत बहुत ही बहुत ही टफ होती है. अगर आपने वो कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. So what are the stages? So according to the research and according to my understanding and according to the involvement which I am into, there are 3 type of stages. Majorly 4 stages होते हैं, लेकिन 3 stages are very very important, जो normally because schools का academic year समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो स्पेशली मई जुलाई, हमको लगता है ये टाइम पे तो स्कूल का वैकेशन चल रहा है, स्कूल बंद है. नो 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 नो, students are not there in school, but teachers, principals, all the decision makers are there in school. They are planning. They are planning. What they are planning? They are planning and they are creating strategies for the coming academic year. वो अपना पूरा लास्ट एकेडमिक ईयर एसेस करते हैं, क्या डिफिकल्टी आई, क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स आई, और वही मई जून जुलाई के अंदर इन द प्लानिंग स्टेज दे आइडेंटिफाई द नीड. उनको पता चल जाता है हमको किस चीज की अभी जरूरत है. सो इफ यू हैव दैट कनेक्शन विद दैट एजुकेटर्स, विद पीपल हु आर ऑलरेडी इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस, सो यू विल कम टू नो व्हाट इज देयर नीड, व्हाट इज देयर पेन पॉइंट, व्हाट इज देयर चैलेंजेस. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज है. यहाँ पर स्कूल बहुत रिसर्च करती है, बहुत मेहनत करती है, और वहां पर उनको उनका चैलेंज, उनका आइडेंटिफाई करके उनकी नीड आइडेंटिफाई हो जाती है. अब उनको क्लियर है उनको आने वाले एकेडमिक ईयर में क्या चाहिए. अगर वो चीज आपको पता चल गई तो यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द चैलेंज, टू अंडरस्टैंड द नीड. उसके बाद प्लानिंग के बाद जो दूसरा स्टेज होता है उनका होता है अगस्त टिल दिसंबर. ये होता है अवेयरनेस एंड फैमिलियरिटी स्टेज. अब ये स्टेज में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आप अगर स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन को क्रैक करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा. सो अगस्त दिसंबर तक आपको अवेयरनेस और फैमिलियरिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं. इन लोगों को पता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस स्कूल्स इज फेसिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ स्कूल. अब वो लोग देखते रहते हैं कि कौन है मार्केट में जिसको हम अप्रोच कर सके फॉर द सोल्यूशन. दे आर नॉट इन अ मोड ऑफ परचेज नाउ. अब परचेज के बारे में नहीं सोच रहे, दे आर जस्ट स्क्रूटनाइजिंग. जैसे मैंने पहले बताया, स्कूल डजंट वर्क वेरी रैपिडली, दे वर्क वेरी स्लोली. इनका डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है. सो यहाँ पर यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी ब्रांड अवेयरनेस की. तो कुछ ने पूछा कि कैसे सर हम अप्रोच कर सके, मेल कर सके. सो इफ यू कैन मेल देम, you can send them mailers, you can send them your proposals, you can send them your profiles. इस तरह से अगर आप डायरेक्टली भेजेंगे तो ऑब्वियसली वो स्पैम हो जाएगा. हाँ, अगर आपके नेटवर्क है, आपका कनेक्शंस है, तो यू कैन सेंड और यू कैन शो द रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन एंड कैन क्रिएट अवेयरनेस. अभी आप सोचोगे कि कैसे खाली ईमेल से काम हो जाएगा. नो नो नो, नहीं चलेगा. ईमेल तो ऐसा है कि कभी सामने वाले ने देखा नहीं देखा, जैसे अभिलाष जी कह रहे थे कि बहुत सारे ईमेल्स स्पैम में चले जाते हैं. नोबडी सीज ईमेल राइट नाउ इन टुडेस टाइम. सो यस, as an educator, as a speaker, as a counselor, we have one beautiful thing. We all are speakers. So what we can do, we can approach schools. Schools के पास एक strategy हमारे पास ये है, एक weapon हमारे पास ये है कि school always welcome speakers who provide free service to them. ये मेरा experience से मैं बोल रहा हूँ. अगर आप कहते हो कि I am a particular speaker or trainer and I can provide you or I can give your student 2 hour का free session on this particular topic on communication skill, they are very happy because you are bringing something new to their school or their institution. और उसके साथ साथ अगर आप ये 2 घंटे का सेशन में आप चार्ज भी नहीं कर रहे हो तो सोने पे सुहागा. Obviously, if you charge them, they will not invite you. They will not, welcome you. But you will say, I am doing because this is my passion, and because of my passion, I want to conduct this session for this school. और ये awareness आप डायरेक्टली स्कूल पे जाएंगे तो थोड़ा शायद आपको चैलेंज होगा. Still, that's the reason I'm telling you again and again. अगर कोई रेफरेंस के थ्रू जाएंगे, means direct reference if you don't have the direct reference, friend of friend, किसी के वाया you can approach them, right? इससे क्या होगा कि आप जब वाया जाएंगे तो आपको सेशंस मिलने के चांसेस हो जाएंगे. तो आप सेशंस आप वहां पर लेंगे तो इससे क्या होगा, it will create brand awareness in that school or in that institute or in that coaching classes. वहां पर they will know you, who you are, what kind of service you provide, what is your quality, why they should care for you, because you are caring right now for school or institution. They will care for you when you come with a deal. और उसके बाद how you are different from others, it will come through your brand awareness, through your actual action when you are performing in schools. You're providing that services to your school. मैं इसके बताऊंगा, इसके पीछे भी एक मोटिव होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. वो क्या है, इन द कमिंग स्लाइड आई विल टेल यू. बट अगर आप इस तरह से ब्रांड अवेयरनेस इस मंथ में करेंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू व्हेन द परचेज और द डिसीजन विल कम. उसके बाद द थर्ड स्टेज इज
जनवरी टू अप्रैल कंसिडरेशन एंड ट्रायल स्टेज, यहां पर दे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन कंसिडर कि अभी हमें ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर, ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनर, ये काउंसलर फाइनल करना है. They are very clear now, but still they want trial. They shortlist the people, they make the top list, top 5 list, top 3 list. So make sure your brand awareness is so powerful that you at least come in the top 3 or top 5 list. अभी काम नहीं बनेगा कि आपके टॉप 5 लिस्ट में आपका डील हो जाएगा. नो, नाउ इन दिस कंसिडरेशन एंड ट्रायल स्टेज, जहां पर यू हैव टू शोकेस योर टेस्टिमोनी. अब आपके पास टेस्टिमोनी है, आपके पास प्रीवियस स्कूल्स के कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ आपके पास कुछ फीडबैक्स है, आपने स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पहले कुछ काम किया है, आपके पास कुछ अच्छे टेस्टिमोनीज है. अगर है तो यू कैन शोकेस देम इन दिस कंसिडरेशन एंड ट्रायल स्टेज. और सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है तो यू कैन प्रोवाइड दैट सोशल मीडिया के हैंडल्स टू देम, सो दैट दे विल कंसिडर you and they will make a trial with you so that they can make a deal with you. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज्यादा टेस्टिमोनी बनाएंगे तो द बेस्ट पार्ट, whenever you go for any kind of training, free kind of a training, have an objective. अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट आई शुड गेट टेस्टिमोनी और फीडबैक फ्रॉम देम. I to always, when I started approaching schools or institution, I used to do free sessions, and at the end of the session I used to take feedback and testimony from schools and institutions, and they are happily give that, because you have done a free session for them, so at least they can give that the feedback for you on the letterhead, and they give that, and it becomes your testimony which we can use in the consideration and trial stage. And the last stage, which is the fourth, which is the final stage, where summertime they make purchase. This is the month, June, July and August are the month, according to the research, 60 to 70% purchase been done by school in these 3 months. This is research, this is a study. This is the time, and we are in the mid of July right now. तो जुलाई का पूरा आधा महीना और अगस्त बाकी है when they make purchase. तो अगर आपने अभी तक उनका तो क्लियर है उनको क्या चाहिए, and you start building that awareness in them and showcase your testimony, build your testimony and showcase this particular thing to them, so that they will consider you and they will take you as a trainer or as a counselor, whatever it may be. So जैसे दिव्या जी आप पूछ रहे थे कि CBSE school have their own counselors. So this is not the last school. You can identify different schools where there is no counselors. You can approach them. Don't wait if the CBSE school stop to you. यहाँ पे हमारे पास already counsel है. Don't stop there. Go to next one. This is the way. This is the stages of school how they make purchases. So you should know that. You should know that, because you will be very smart enough to crack the deal if you know these particular stages. अगर यहां पर आप पुश करेंगे उनको तो वो कभी परचेस नहीं करेंगे, और इसीलिए इस तरह से आपको क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ता है. नाउ डेज आई एम कनेक्टेड टू इंस्टीट्यूट, ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट. आप बिलीव नहीं करोगे कि कई साल मैंने सिर्फ उनके लिए ब्रांड अवेयरनेस का काम किया. आई यूज्ड टू गेट पीनट्स, एक लिफाफे में एक चिल्लर मुझे अमाउंट दे देते थे, एंड आई यूज्ड टू बी हैप्पी बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू गेट मनी और प्रॉफिट फ्रॉम दैट. My objective was something else, because I want to connect with them for the bigger project, and now I am a part of that project, and monthly अच्छा खासा amount मैं लेता हूं उनसे भी, because I have built that awareness, that brand awareness with them, and they have considered me, and they made me the core part of their organization, of their institute. I am connected with very reputed government, of central government, Maharashtra government institutes. They having different projects of government degree diploma programs, and I'm connected with them. Why? Because I have spent that time with them. But most of the educators, most of the trainers or speakers or counselors, they want कि आज जाएंगे और कल deal हो गया तो ठीक है, नहीं तो yeah, this is not my cup of tea. You have to be so persistent, you have to be so determined कि जब तक होगा नहीं, छोड़ना नहीं. Let me tell you, अगर इतने सेशंस भी ले लिए उनके साथ में, तो it will be a great testimony for you. तो ये कुछ स्टेजेस है जो आपको समझना है, जानना है. And let me share with you few more sales tips you must know. जब भी आप स्कूल्स को और अप्रोच करेंगे, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, you should know what challenges schools are facing. अगर आपको पता चल गया through that network, through that friend of friend or something, that conversation you are with, तो आपको वहां पर ये रियलाइज करना है, जब भी आप सेल्स के लिए जाएंगे, नेगोशिएशंस के लिए जाएंगे, यू शुड कनेक्ट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज सो दैट योर प्रोडक्ट और योर सर्विस मेक देम अंडरस्टैंड. दिस विल remove the challenge
remove the pain point. It will remove their this tension what they are facing right now. So you will provide them the solution. If they have a need, you have a solution for that particular thing, and you should make them understand that you will going to provide value in their institution. You will going to provide value in their organization. You should make them, and how you will come to know this challenges. Let me give a beautiful, जहाँ पे अभिलाष जी कह रहे थे, you should ask question. I think Pushpalata ji is also there in this session. She took a beautiful session on spin process. Spin process is part of sales. मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, पुष्पलता जी ने ही उसको 2 घंटे सेशन में लिए थे. मैं उसका ऊपर से बताता हूँ. Spin is a process of asking questions. आप सिर्फ क्वेश्चन करो, सामने वाला आपको पूरा प्रॉब्लम्स, अपना नीड्स, अपनी सारी चीजें बता देगा. तो स्पिन, SPIN प्रोसेस ऑफ क्वेश्चंस, ये सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो अगर आप नहीं जानते हो तो उसको सीखिए. तो मैं एक थोड़ा सा सारांश में ब्रीफ में आपको बता देता हूं. व्हाट इज स्पिन? SPIN. S stands for situational question. Ask your prospect. आप जब किसके सामने बैठे हुए, ask situational question. अभी परिस्थिति क्या है, क्या challenges you are facing, what problems you are facing. This is called situational question. P stands for problem. What problems you are into now. तो प्रॉब्लम्स उनको पूछे, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है. देन कम्स विद द थर्ड अल्फाबेट विच इज I, implication. मतलब अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगी आपकी परिस्थिति अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो. एंड लास्ट इज नीड पे ऑफ. तो सिचुएशनल क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन, implication, and last is need payoff. Need payoff is you are giving solution now. अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो स्कूल को या इंस्टीट्यूशन को आप कैसे देखते हैं, तो दे विल बी वेरी हैप्पी. अगर ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज निकल गया तो वी विल सी दिस स्कूल्स टू नेक्स्ट लेवल, वी विल हैव गुड अमाउंट ऑफ एनरोलमेंट इन दिस स्कूल्स. तो आप बोलेंगे यस, दैट्स द रीजन आई एम हियर फॉर. So first you need to identify the challenge, the pain point of your prospect. ये खाली स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं, अगर आप 1-on-1 भी करते हैं ना, तो स्पिन को यूज करिए जिससे आप सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे. तो नीड को आइडेंटिफाई कर लिया तो यू कैन प्रोवाइड देम सॉल्यूशन. So this is the first sales tip which I want to give you, and the second is make sure they understand that you're not adding to their workload. Because आप एक चीज जान लीजिए, स्कूल से ज्यादा वर्क लोडेड कोई नहीं होता. स्कूल्स आर वेरी लोडेड विथ वर्क. वो अपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते बॉस. अगर आपने ऐसा उनको रियलाइज करवाया कि यू आर एडिंग टू देयर वर्कलोड, तो उनको मजा नहीं आएगा. मेक देम रियलाइज यू आर नॉट एडिंग, यू आर ईजिंग देयर वर्कलोड. आपके साथ खुशी खुशी जाना पसंद करेंगे. मेन जो टेंशन चल रहा है स्कूल को, आप उसको ईज करने वाले हो, उनको इजी करने वाले हो. दे विल लव टू कनेक्ट विथ यू. एंड द सेल्स टिप नंबर 3 इज यू शुड हैव पेशेंस. ये मैं बार बार कह रहा हूं बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कई महीने सालों लगा दिए एक टाइप के लिए. स्कूल्स आर नॉट रैपिडली मूविंग सिस्टम. ये आपको जानना जरूरी है. इट्स अ लॉन्ग सेल्स साइकिल. बहुत लंबा सेल्स साइकिल चलता है स्कूल का. आप कहीं पे भी जाएंगे 1-on-1 या कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां शायद पॉसिबल है आपका डील 1-2 दिन में या हफ्ते या महीने में हो जाए. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बल्क डील, ना बड़ा डील. बिकॉज एक बार डील हो गया ना, लेट मी टेल यू, अभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है. मंथली, क्वार्टरली, ईयरली यू आर गेटिंग अमाउंट एंड यू आर गिविंग योर सर्विस. बट यस, यू हैव टू प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विस टू योर टू द स्कूल और टू द इंस्टीट्यूशन. अगर आप थोड़े पुशी हो गए ना प्रोसेस में, अगर आप थोड़े पुशी हो गए जहां पे वो प्लानिंग और अवेयरनेस का स्टेज चल रहा है, वहां पे अगर आपने थोड़े पुशी हो गए तो यू विल इट विल टर्न डाउन योर डील. आपका डील क्लोज होने से पहले ही खत्म हो जाएगा. दे विल नॉट एंटरटेन यू बिकॉज दे आर वेरी स्लो मूविंग. देयर सेल्स साइकिल इज वेरी लॉन्ग एंड वेरी स्लो. यू शुड अंडरस्टैंड दैट. अगर आज आपने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, लेट मी टेल यू, आप कई सारे स्कूल्स के साथ में टाई अप कर लेंगे. आपको फुर्सत नहीं रहेगी. यू विल बी सो बिजी डूइंग ट्रेनिंग सेशंस फॉर एवरी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एनी स्टूडेंट्स यू आर डूइंग ट्रेनिंग फॉर. बट उसके लिए पहले यू हैव टू बी पेशेंट. अगर आपको स्कूल के साथ में बल्क टाइप करना है तो. फोर्थ, ट्राई टू आइडेंटिफाई अ कनेक्शन नेटवर्क. बहुत जरूरी है. मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ये सेल्स टिप्स में भी रिपीट कर रहा हूं. यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन एंड नेटवर्क. नेटवर्क एंड कनेक्शन मींस लाइक यू शुड आइडेंटिफाई सम टीचर्स, सम एडमिन और सम फ्रेंड और सम फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जो है ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में है, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है या कोई इंस्टीट्यूशन में है. आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई. लेट मी टेल यू, अगर एक कनेक्शन मिल गया ना, विद दैट वन कनेक्शन यू विल गेट डिफरेंट कनेक्शन. पर अगर आप एक स्कूल के साथ कनेक्ट होते हैं ना, यू आर नॉट कनेक्टिंग विद दैट स्कूल, यू आर कनेक्टिंग विद दैट स्कूल प्रिंसिपल, यू आर कनेक्टिंग विद दैट स्कूल टीचर्स, यू आर कनेक्टिंग विद दैट स्कूल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, यू आर कनेक्टिंग विद दैट स्कूल पेरेंट्स.
So lot of network you can build in one single school. So try to identify. एक बार मेहनत करनी पड़ती है, let me tell you, और वो स्कूल का एक टीचर और कई टीचर्स को जानता है. So try to identify a connection network, जहां पर आप, अगर उनका कोई फोरम है जहां पर आप पार्ट बन सकते हैं, तो बी अ पार्ट ऑफ दैट फोरम. अगर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़े, करिए. अगर आप रियली बल्क में बिल्ड टाई अप करना चाहते हैं, स्कूल के साथ में काम करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करना चाहते हैं, तो I'm telling you, if you build such connections, your sales, your transition will be very smooth. Because वो व्यक्ति जब आप टेबल पे बैठेंगे with the authority person, with the man, means money authority need person, the decision maker, that reference will help you. वो पहले से आपके लिए एक पिक्चर क्रिएट करके रख देगा वहां पर, और वो आपका जो डील है वो बहुत ईज कर देगा, आपका बाइंग साइकिल को बहुत ईज कर देगा. And you can take the reference, and school will also know कि ये कहीं किसी के reference से आया है, तो you will get that priority. Let me give my example now, personal example. I have taken training sessions many in schools and colleges. One of that training, junior college in Mumbai, where I studied my commerce. वहां पर मैंने अप्रोच किया एक सेशन के लिए. So I went there, and second year JC स्टूडेंट थे, उनके लिए मैंने कहा कि एक सेशंस में लूंगा जहां पर उनको मैं बहुत सारी चीजों के लिए मोटिवेट करूंगा एंड थिंग्स लाइक दैट. सो दे हैव एक्सेप्टेड एंड दे हैव गिवन द ट्रेनिंग रूम. पूरा 300 बच्चे थे, और 300 बच्चों को पूरा इकट्ठा किया एक हॉल के अंदर उनके, और उसके बाद दे हैव गिवन मी एवरीथिंग. जैसे अभिलाष ने कहा ना, हमको जो जो चाहिए, माइक, प्रोजेक्टर, दे अरेंज फॉर दैट. दे गेटिंग आउट ऑफ द वे सर्विस फ्रॉम समवन. अब क्या हुआ, जब वो सेशन में आप गए, तो आप बहुत बार ना, यू हैव टू वेरी स्मार्ट इनफ, जैसे अभिलाष जी ने कहा, यू हैव टू वेरी स्मार्ट इनफ, अनिश जी, रतती जी, बिकॉज यहाँ पर ना आपको बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा एज अ एंटरप्रेन्योर. यू हैव टू बिल्ड दैट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट. लेट मी गिव माय एग्जांपल. मैंने क्या किया, जब मैंने क्या किया, मींस मैं वही करता हूँ हर जगह पे. जैसे मैंने कहा ना, अगर आपकी डील होती है तो बेनिफिट, डील नहीं होती है तो भी बेनिफिट ले सकते हैं आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अप्रोचिंग अ स्कूल और अ जूनियर कॉलेज और एनीवन, इंस्टीट्यूशन. तो मैंने क्या किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरे जूनियर कॉलेज का. वहां पे 300 बच्चे थे. So I was very aware कि 300 students were there, and I have taken everything. मैं पहले ट्रेनिंग जाने से पहले, मैं ट्रेनिंग का जो कोऑर्डिनेटर मुझे असाइन करते हैं, मैं उससे पूछ लेता हूँ सारा अरेंजमेंट हो गया है, माइक सारी चीजें रेडी है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के जो अरेंजमेंट है वो सारी चीजें रेडी है. एंड आई टेक द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स होंगे, अगर स्कूल तो डेटा देती नहीं है, तो कितने स्टूडेंट्स है टोटल, तो बोले इतने 280 to 300 स्टूडेंट्स होंगे. तो आई सेड ओके, कितने फीमेल्स होंगे, कितने मेल्स होंगे, तो सब पता कर लिया मैंने. पहले अपने क्लाइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसको आप जाके ट्रेन करने वाले. सो द डे व्हेन आई वेंट देयर, आई टुक few things with me. As an entrepreneur, I took few things with me. One beautiful pen, a Mont Blanc pen like this, for principal, a gift for principal. And I made this exclusive pen. You can see this pen, one pen is there with me, this exclusive pen with my marketing on it, with my detail on this particular printed on this pen. I took this packet of this pen with me. And first in the morning, before starting the session, I met principal and given the gift to principal. Okay, thank you so much for providing me this place, this space to teach your students. Principal said, it's our pleasure because you are doing it. Obviously, back of the mind, मेरे यही चल रहा था, free of cost में और क्या चाहिए. So the principal, I asked a permission from him. Sir, at the end of my session, if I take feedback from the student, is it okay for you? So principal ने कहा, oh, it's okay. No, obviously, as a trainer, you should take feedback at the end. तो मैंने कहा, okay. So I took the permission. Now I started my session. All the junior college teachers, professors, facilitator were there in this particular session, and I started my training session. At the end of the session, I informed students that I am distributing a feedback form amongst you. मैंने मेरी टीम को कहा feedback form बांट दीजिए, और मैंने feedback form बहुत ही simple बनाया था. What you like in the training, you have to put your name, your number, what you like in the training, what feedback you want to give to me. If I am, you can give me a number from 1 to 10. If I am 5, what will help me to go to 10? उतना छोटा छोटा मैंने क्वेश्चन पूछा था उनसे, और लास्ट में पूछा था कि this kind of training, if can be arranged for your friends or for your colleagues or for anyone, जहां पर भी आपके इस तरह के फ्रेंड्स होंगे जो आपकी क्लास की जैसे ही है 10th 12th में, तो आप उनके नाम नंबर भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हो कि उनको भी ट्रेनिंग मिले. जस्ट सिंपल सा फॉर्म बनाया. मुझे नहीं पता था कि स्कूल के बच्चे उस पर लिखेंगे, कॉलेज के बच्चे, जूनियर कॉलेज के बच्चे उस पर नाम लिखेंगे. बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग और आस्किंग फॉर द फॉर्म इन रिटर्न, आई शोड दिस पर्टिकुलर पेन. आई टोल्ड दैट स्टूडेंट के बच्चे लोग, अगर आपने ये फॉर्म को बराबर भरा
तो आपको ये पेन मेरे तरफ से फ्री गिफ्ट मिलेगा। एंड दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव पेन, यू नो, दिस इज 3 in 1 पेन। आप इसे लिख भी सकते हो, आप इसको अपना मोबाइल स्टैंड भी बना सकते हो, और इसके पीछे एक स्टाइलर है जिससे आप अपने फोन को यूज कर सकते हो एज अ स्क्रीन टच। तो दिस इज वेरी स्पेशल पेन माय डियर स्टूडेंट्स। तो fill that form, my team will going to see the form. If your form is incomplete, you will not going to get this pen. So I made the thing clear in front of student. The student filled the form, भर के लिखा, अपना नाम नंबर बराबर लिखा, और रेफरेंस भी लिखे। You won't believe 300 students were there. With that form, I came back from that school with around 550 numbers of students. वो 300 बच्चों के तो नाम नंबर थे ही, उसके अलावा उन बच्चों ने रेफरेंस लिखे थे कि मेरा एक फ्रेंड है जो 12वीं में ही है या एसएससी में कॉमर्स कर रहा है, और उन्होंने उसके भी नंबर्स लिखे। So I got 500 to 550 numbers from that college, junior college. और उसके अलावा what benefit I got, you know, because schools के principal, you know, teachers were also there. They were also very happy कि सर एक पेन मुझे भी दीजिए ना। I said, my pleasure, ma'am, please. उनको दिया। Sir, where to get that pen, 3-in-1 pen? I would like to get some bulk of that. You have to use your creativity. This is my thing. You can bring 5-in-1 pen. Right? So yes, so this is the way you can approach them. No? At the end of the day, what is your motive? You should get the feedback, you should get the number of the student. Because पैसे तो नहीं मिला है कॉलेज से, at least इनका नंबर मिलेंगे, उसके बाद we can as a counselor approach them. तो दिव्या जी, अगर स्कूल अलाउ नहीं कर रही है तो कुछ अलग स्ट्रेटेजी करिए जिससे आपके पास नंबर आ जाए, स्कूल के बाहर आप काउंसलर का काम कर सके इनके साथ। You have to be very smart enough, you know. So I am sharing my secret, you know. तो आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह के सेशन से बहुत फायदे होते हैं, you know. तो वहां पर जो स्कूल के टीचर्स वगैरह होते हैं वो बोले सर, एंड नो फ्रॉम दैट, यू नो, इन द फैकल्टीज, few faculties are visiting faculties, you know, जो एक कॉलेज में नहीं होते, काफी कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो, they are visiting faculties. तो few faculties comes to us, you know, they share the numbers and says, you know, sir, हमारे एक और कॉलेज में I go to teach students of HSC, so can you come to that school and give kind of sessions over there? I said, it's my pleasure, ma'am. तो आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह से काफी रेफरेंस से स्टार्ट मैंने किया, उसके बाद काफी रेफरेंस से वो टीचर्स जाकर प्लेटफॉर्म बना देते थे, प्रिंसिपल से बात कर लेते थे। एंड आई यूज्ड टू गेट अ कॉल फ्रॉम दैट स्कूल कि सर आप आके मिलेंगे, हमारे प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। आई यूज्ड टू गो देयर, माय द स्टेज इज ऑलरेडी सेट। अब मुझे प्रिंसिपल से जाके इधर वेलकम मिलता है, मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है वो प्रिंसिपल को, ऑलरेडी एवरीथिंग इज सेट, बिकॉज वो टीचर ने मेरा वो सेशन से इतने इंप्रेस हो गए कि उसने वो प्रिंसिपल को रेडी कर लिया। नाउ आई एम रेडी टू गो एंड स्टार्ट द सेशन इन दैट स्कूल विदाउट एनी चैलेंज। So this is the beauty, you know. Not only that, I will share a few more secrets of mine, you know. वो स्कूल की टीचर्स के साथ में जब आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, जब भी कोई चैलेंजिंग स्टूडेंट उनके पास आता है कि मैम आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन माय करियर, वो क्या करती है पता है? उसका नाम और नंबर मुझे शेयर कर देती है कि सर कैन यू हेल्प दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। So we are there to solve that problem. We are counselors. Why we are sitting here? So we can charge them, right? And you won't believe. One more secret I want to reveal. मैंने काफी स्कूल्स के टीचर्स के बच्चों की काउंसलिंग की है, and I've charged them 5,000, 6,000 rupees. मैडम नॉर्मली 10,000 लेता हूं, लेकिन आपके लिए एक्सक्लूसिव, आपके लिए 5,000 rupees I will take. And I have charged them. तो मुझे स्कूल से कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, but I got that business after that sessions. So you have to be very creative, my dear leaders. So this is the sales tips which I am giving you. So what school wants, you know, at the end of the day, what school wants, you should provide them evidence of success, you know. आपके साथ में क्यों जुड़ना चाहेंगे? Why they want to do tie up with you? Because they want to see success, you know. Your tie up, your collaboration should take the school to the next level, right? अगर जहां पर है वहीं रहेंगे तो क्या मतलब है आपका? Your presence should bring that, you know, that momentum to school. तो आपका एविडेंस, तो एविडेंस कहां से आएगा? थ्रू योर टेस्टिमोनी। आपके जो सेशंस आपने बाहर किए होंगे, स्कूल से, कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से फीडबैक लीजिए, वीडियो फॉर्मेट में फीडबैक लीजिए, ना रिटन फॉर्मेट में, लेटर हेड पे फीडबैक लीजिए और वो फीडबैक दीजिए ये स्कूल्स को। दिस इज द एविडेंस आई हैव प्रूवन इन दिस स्कूल्स, so I can provide the same solution in this school as well, in this institution as well. तो आप स्कूल्स को जितना एविडेंस देंगे, जितने प्रूफ देखेंगे, जितने फीडबैक्स देंगे, जितने टेस्टिमोनी देंगे, उतना ज्यादा आपका डील क्लोज होना मुमकिन होगा। School wants क्या और क्या चाहिए? Schools को benefit चाहिए, so list down the benefit you're going to provide to that school, to that institution. List down the USP, what is there in you, how you're going to provide the value and solution to that school, how you will take that school to the next level. अगर आपके पास इतने benefits है, list down करिए और पूरे benefits की पूरे खोल दीजिए पिटारा उनके सामने, and they will be very happy because they want benefits.
And lastly, yeah, schools, they also think about the cost. They want it should be cost effective because उनका एक बजट होता है, उनका एक बजट होता है, तो वो बजट को आपको ध्यान में रखना है, वो बजट के हिसाब से ही you can close the deal with them. So you have to be very, bring that evidence to them, that you will going to bring the success story to them, you will bring lot of benefits to the school, and it is very cost effective when you connect with me. ये आपको realize कराना पड़ेगा स्कूल को. अगर आपने ये करवा दिया, I'm telling you, the deal is yours. They will connect with you. Now, negotiation skills and steps, the last slide of our presentation, जिसे अभिलाष ने तो काफी चीजें बता दिया. The one, the only slide I want to share with you all, जब भी आप negotiation के लिए step पे जाएंगे, सेल्स के स्टेप पे जाएंगे, always know your objective. आपको आपके बारे में पता होना चाहिए. Why you are approaching this school? You are approaching this school for profit, or you are approaching this school for testimony. For example, if I am going for a free session, so अगर मुझे थोड़ा भी भनक लगी कि यहाँ पे मुझे पैसे मिल सकते हैं, I will not go and ask for money, because मेरा objective today is only to give my free sessions and get testimony. तो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर. आप उससे डिरेल नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए. अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो वहां फ्री सेशन देकर मत आइए. सो नो योर ऑब्जेक्टिव. You should know your objective. You should know yourself before going to the negotiation, or before going to the sales, or before going and approaching the school or institutions. You should know your objective. And secondly, after knowing yourself, your objective, you should know your product, which is very, very important. Most of the people, most of the salesperson, or most of the entrepreneurs, or majorly entrepreneurs, they know their products. But few people, they behave like an entrepreneur. They're not an entrepreneur. They don't know their products. So you should know your product and services properly. You should know the in and out of your product. You should also do some market research कि कौन कौन मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, क्या प्राइस पे दे रहा है. You should know the market value as well, and how you stand different from others. You should know that as well. क्योंकि कभी अगर आपको प्रिंसिपल ने या कोई भी अथॉरिटी ने ये बोल दिया कि इससे कम में तो मुझे वो दे रहा था, तो यू शुड नो दैट कि सर इससे कम प्राइस में तो कोई नहीं देगा. दैट्स द रीजन यू हैव सीन आवर फ्रीलांस एजुकेटर का सेशन, जहां पर हम लोग बोलते हैं दिस इज आवर नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड. हम ये 5999 में देते हैं. अगर इस तरह का 5999 में इस तरह का इकोसिस्टम कहीं पे भी और आपको मिल जाए तो वी विल गिव यू मनी बैक. ये क्यों कहते हैं? बिकॉज हमने मार्केट का स्टडी किया हुआ है. few participants comes and say, such same kind of ecosystem is given by Arfin Khan. विवेक बिंद्रा जी ये दे रहे हैं. मैंने कहा अरफिन खान का कॉस्ट निकालिए लैक्स में है, विवेक बिंद्रा जी का कॉस्ट निकालिए थाउजेंड्स में है. तो वी आर द कॉस्ट इफेक्टिव company who are providing you this ecosystem. Why? We have done the market value, we have done the market survey, we have done the research, and we know what we are and how different we are from them. So you should know your product and services. Very, very important. And once you know yourself and your product and services, thirdly, you should know your client. Very, very important. You should know your client. How, the need and the pain point, how they are in urgency or important to get that solution from you. जैसे मैंने स्टेजेस बताए, अगर वो स्टेजेस लास्ट पे है, उनको सोल्यूशन चाहिए ही, अभी लेना ही है, तो यू शुड नो योर क्लाइंट. यू शुड नो, एंड सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग काम में आएगी आपके. वो नेटवर्क और कनेक्शन आपके काम में आएंगे. यू विल कम टू नो योर क्लाइंट वेरी वेल. अगर वो स्कूल का कोई एडमिन का बंदा आपका फ्रेंड है या फ्रेंड का फ्रेंड है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा उस स्कूल के क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या अर्जेंसी है, क्या इंपॉर्टेंस है वो स्कूल का, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू अप्रोच देम एंड टॉक एंड टच दैट पेन पॉइंट and provide them solution. So you should know your client as well. Very, very important. So पहले तो अपने आप को जान लिया. You should know your objective, then your product and services, and then you should know your client. And fourthly, you should prepare a strategy. जब भी आप negotiation के लिए जाए, हमेशा एक strategy prepare करें कि आपको लगता है कि आपने जो prepare किया है वो हो जाएगा. नो, ऐसा कभी नहीं होता. You should always have plan A, B and C. अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा प्लान है. अगर मैंने ये किया तो ये, अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा. So you should have multiple plans with you. अगर मेरा ये काउंसलिंग का प्रोजेक्ट, अगर उन्होंने कहा कि काउंसलिंग ऑलरेडी हमारे पास काउंसलर है, तो आई हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर देम, आई हैव लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स फॉर देम, आई हैव एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोग्राम फॉर देम, आई हैव एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स फॉर देम. तो अपने पास पिटारा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए. अगर काउंसलिंग के लिए नहीं देते, अगर आपके साथ अच्छा रेपो बन गया, उसके साथ आस्क फॉर अ फ्री सेशन फ्रॉम देम. Yes, sir, ma'am, can I take a session in your school? I am very passionate about training. I love talking to people, and especially I love talking to kids. So can you give me a platform? तो आपके लिए 1 घंटे का मैं फ्री सेशन करना चाहूंगा. मुझे आपने एक कीमती समय दिया, तो मुझे भी आपको एक सर्विस देना है.
बाकी आपका हिडन एजेंडा है उसके अंदर। जब आप जाते हो तो कुछ ऐसा करके आओ कि वहां से एटलीस्ट कुछ ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, अगर आप ये समझ जाए, आई एम टेलिंग यू इट विल बी ग्रेट फॉर यू। और काफी स्कूल पे हमेशा कहता हूं, सिर्फ 12 से 15 स्कूल के साथ आपका टाइप हो गया, आप 360 डेज के लिए 365 डेज के लिए बिजी हो जाओ। आप बोलोगे सर टाइम ही नहीं है मेरे पास, बट उसके लिए प्रिपरेशन आज से करनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट इज गिव देम ऑफर्स, कंसेशन। जब भी आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे, कभी भी प्राइस मत बता दीजिए पहले कि मेरा काउंसलिंग का या मेरा कोचिंग का, मेरा ट्रेनिंग का ये प्राइस है। डोंट टेल देम। जैसे प्रेरणा ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेरा प्राइस क्या होना चाहिए इस करियर काउंसलिंग सेशन के लिए। डोंट टेल देम प्राइस, गिव देम ऑफर्स एंड कंसेशन इन द बिगिनिंग, यू नो, एंड आस्क फॉर देयर एक्सपेक्टेशन। सर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या बजट है, आस्क फॉर देयर एक्सपेक्टेशन एंड बजट। एंड ऑलवेज सेज वी ऑलवेज चार्ज अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, यू नो, ताकि आपका भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, स्कूल का भी है। तो इतना गिरा के भी भाव ना बोले जिससे आपको तकलीफ हो जाए, कि आपको लगे ये तो क्या पीनट्स में मुझे ट्रेनिंग दे रहा है। तो गिव देम ऑफर्स एंड कंसेशन। ऑफर्स एंड कंसेशन का मतलब सिंपल है। फॉर एग्जांपल एज अ काउंसलर, अगर आप काउंसलिंग की डील करने के लिए स्कूल में गए हैं, तो वहां पर ऑफर्स एंड कंसेशन दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सेइंग सर आपका प्राइस बहुत हार्ड है, बहुत भारी है, बहुत हैवी है, सो सर माय साइकोमेट्रिक एनालिसिस कॉस्ट दिस मच, यू नो, बट आई हैव वन मोर असेसमेंट व्हिच इज कॉल्ड लर्निंग स्टाइल। I can give this particular thing. I charge separately for that, but for your school, because of your relation, because of your conversation, because of the time you have given to me, I will add this learning style in this particular package for you. तो मैंने क्या किया, ऑफर दे दिया उसको, एक ऑफर दिया, ये एक दे दिया, मेरा लर्निंग स्टाइल आपको इसके साथ में अटैच कर दूंगा, मैं इसका अलग से सेपरेट चार्ज नहीं करूंगा। तो ये गिविंग ऑफर्स टू देम। पहले ही सारे पत्ते मत खोल दीजिए, यू नो, आई एम गिविंग यू साइकोमेट्रिक, आई विल आल्सो गिव यू लर्निंग स्टाइल, आई आल्सो गिव यू इमोशनल इंटेलिजेंस। डोंट डू दैट। अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले अगर साइकोमेट्रिक के साथ ही जा रहा है, रेडी है, तो उसको सेपरेटली लर्निंग स्टाइल के लिए सेल करिए। If they are asking for some offers, attach that learning style with that, giving them offer and give them concession. Concession कैसे देंगे? No sir, if you give me bulk order like 100 का एक साथ देंगे, तो I will give you concession. I will charge this much, you know. आपने देखा होगा जब भी आप लोग कभी आते हैं तो आप कहते हो कि हमारा सर रिपोर्ट का 800 रुपीज लेते हो। अगर हमने ज्यादा रिपोर्ट दिया तो वी से अगर आप मुझे 50 रिपोर्ट दोगे तो मैं आपको 500 रुपीज में रिपोर्ट जनरेशन करके दे दूंगा। यू आर गिविंग मी बल्क डील, आई एम गिविंग यू कंसेशन। तो आप कंसेशन और ऑफर्स की बात करिए, यहां प्राइस की बात मत करिए। Ask for their expectation and then come to the price when you will negotiate on price. And whenever you talking about price, don't be in hurry. तो आपको ना वहां पे वो कुछ यहाँ पे ना यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू रीड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द अपोजिट पर्सन। जहां पर सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि ये सामने वाला बंदा सिर्फ आपसे कोटेशन, आपसे प्राइस जानने की उसमें बैठा हुआ है, या ही इज वेरी सीरियस बायर और परचेजर। You will come to know by the body language if you are a good body language reader. If not, start reading some books or attend some training on body language. So don't be in a hurry. Don't be in a hurry. अगर वो कहते हैं कि नहीं सही, जब बहुत है इतना कर दो, take a pause, think about it, and go again with offer and concession. Don't talk about the price. Give them offers and concession and stick to your price. But at the end, if you have quoted, for example, 5,000 rupees and your base price is 3,000 rupees, play in that 5-3. Sir, I can give it to 4.5. Okay, 4. And the base price is 3. 3 से नीचे बिल्कुल नहीं आना। तो क्या होगा, विन लूज हो जाएगा। तो यू विल बी नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड दैट सर्विस टू देम, और वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाओगे बिकॉज आपको पैसा कम मिला, उससे आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। स्टिक टू योर प्राइस। डील नहीं होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डील होती है तो आई ऑलवेज सेज नो, दिस 7th पॉइंट, इफ यू मेक अ डील, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर अभिला जी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट, तो मेजरली एक एमओयू बनता है। आई ऑलवेज साइन अ एमओयू विद इंस्टीट्यूट्स, विद स्कूल्स, विद कॉलेजेस। ये एमओयू मेजरली स्कूल्स ही बनाती है, बिकॉज आप बनाओगे तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन डालोगे, और स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, दे मेक देयर ओन एमओयू, दे हैव द रेडीमेड एमओयूज विद देम। वो उसमें थोड़ा सा अल्टर करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बट बिफोर साइनिंग द एमओयू you should listen, read that MOU. If you want to make any kind of changes in that MOU, you should ask for that and make a deal, make a contract, sign that MOU and build a good relationship with them. If you got a deal, if you sign the MOU, provide proper service to that institution or that school. Give them what you had offered them. जो कमिट किया उससे ऊपर ही डिलीवर करना ना, अंडर कमिट ओवर डिलीवर, डोंट ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर, डोंट डू दैट।
So you will build a good relationship और आपका continuously business आता रहेगा वो institution से, वो school से. And the second thing is, if you didn't get a deal, आपका deal नहीं हुआ, don't be upset. Still keep that relationship with the school, because you're not meeting with that school, you are meeting with that principal, you are meeting with that school's teachers, you are meeting with different parents in that school. तो बहुत बड़ा network है. अगर आपने relation खराब करके आ गए, at the end if you didn't get a deal, आपका वो relation खराब हो गया. At least आप वो school में जाकर बैठ के आए, means you are a part of that school now, to build a good relationship कि next time आप वहां जाए तो कोई एक admin या teacher या जो भी coordinator था, वो authority person को आपको मिलाने वाला, वो authority person तक पहुंचाने के लिए जो coordinator था उसके साथ relation build करके आ जाओ, ताकि next time वो coordinator आपकी help कर सके और आपको अलग जगह पे connect कर सके. You should always build a good relationship with the school authority or people you are meeting with. If you get a deal, celebrate. If you didn't get a deal, don't worry. मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल्स दिए. कई स्कूल्स में मैंने फ्री सेशंस लिए, उसके बाद मुझे वहां से स्कूल से डेटा मिला, मेरी टीम ने काफी काउंसलिंग की उनके बच्चों की, उसके बाद टीचर्स ने मुझे अलग अलग जगह पर पहुंचाया, उनकी टीचर्स ने, उसके साथ साथ वो टीचर्स के बहुत सारे रेफरेंस आते थे कि सर ये बच्चा कंफ्यूज है, इसको गाइड कर दीजिए, उनकी काउंसलिंग का प्रोजेक्ट मिला, उसके साथ साथ टीचर्स के बच्चों का काउंसलिंग का प्रोजेक्ट मिला. बहुत बिजनेस मिलेगा. बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद देम. If you didn't get the business, don't worry. Always remember this particular quote by Anthony. Anthony is a sales leader and also an international speaker and an author. And he always says one thing, refuse to attach a negative meaning to no. बहुत सारे लोग कहते हैं no means next opportunity. Take no as a positive feedback. Don't take it negative. And take this particular thing no as a chance to change yourself, as a chance to create more value next time, as a chance to create lot of changes in your personality and in your presentation, in your communication. It's a chance of doing something new next time. Try again later. So take no as a positive feedback. Don't take it as a negative. So if you will take this no as a positive, you will grow, you will improve, you will crack many deals in the time to come. So with that, I just want to thank you. Thank you, Avranji, for the great insight on in-depth insight on how to deal with institutions and schools. We have our leader Pushpalata, who has been successfully generating a lot of conversions for counseling. Recently, she had done a tie-up with one of the companies, also HR of the companies. So let me on our special request, Pushpalata is here to share her success stories. We can learn from her also what she's success mantra kya hai. Pushpalata, over to you. Thank you, Abhilash, and thank you, Imran. It was really a wonderful presentation. A lot of things that you spoke, yes, I resonate with all of them. Yes, I recently closed a deal with one of my previous clients. I've already conducted some training for the company earlier, few years back, and it's a continuous process. I keep conducting some of the other training, and also have done individual coaching also for some of the executives of the same company. But my what I learned in my first job, and the mantra that was given by my manager then in the year 2000, that whenever you go out for sales, don't sell. And to date, I follow that. So I met this gentleman who's a director of the company in a networking event. And then I introduced myself. I never told him that, okay, I would like to conduct training or, some sessions with you or your organization, nothing. But later I got a call from the director of the company, and he said, I would like to meet up with you and talk about conducting some training sessions and see how it can go. And that's how the thing started. And during this period, like 5 years now, we know each other. And it's quite a friendly relationship I have with him. So we just met over coffee one day, and he was
we were talking about our experiences of this pandemic and everything, and he was saying, I see a lot of my employees have low morale and I don't know what to do and I can't read their mind. So then I suggested, but it's very I didn't say why don't you get the emotional intelligence done. I said it is good to know their emotional intelligence, and it is there are tools available to check how their emotional intelligence. If you know that, then it will be easier for you. So then he said, can you help me with that? I said, yes, of course. I have a wonderful business partner, Guru Schools, and we have a wonderful tool of not only having emotional intelligence identified, profiling, or also we have, then I explained him the entire thing and he was very happy. He said, okay, let's do for 1 or 2. I said, okay, no problem. Let's do for 1 or 2 of your employees and then see how it goes. And then he asked me to explain. I said, see, this is how it goes. And I also told him that even I have done my, just as a curiosity, even I got my profiling done. And I was very happy, and it really guided me to what I should be doing, where I am as in terms of emotional intelligence. So that trust was already there, but when it comes to a relationship and business, then you have to mold it in a very different way. So yes, as a friend, he trusts me. As a trainer, he trusts me because I've already conducted. But this was something new and conducting, and then for individual, it's going to be different counseling session and everything. When I explained him the process, though he said, "Ki I'll get done only for 1 or 2 people, and then we'll see for the other." I didn't say ki no, you should go for all your employees. I didn't say it. I said absolutely fine, and please go ahead. Let me know when it is a suitable time, and you can share the detail. And then he said, okay, fine. You once you back home, you send me the proposal, and I'll approve it, and we'll go ahead. So when I sent him the proposal, he gave me 8 employees. The profiling to be done for 8 employees, and this is how and now after 8 he's already talking about some other also, and he said this is really a beautiful tool, and I'm looking forward for the success. And this this is how I generally practice. I go to networking meets also, and as I said, I never sell. I just speak about the benefits that they can get from whatever products that have, whatever services that we can provide as trainer, because we do not have products. We cannot show them something that is tangible. So it is services, so benefits with success stories, with your own experience with the product. For me, these things worked. This is how I generally get the deals. This is how I'm approaching with, and I not only yes, LinkedIn is one platform. I would like to share that I get a lot of my business from there, connecting with the right people, sending them proper message. Not because there are a lot of HR and L&D in my connections, but not to everyone I send the same message. So understanding their profile, their company, then I design the message, my introduction message, and services that might be useful for them. And for further details, I provide my contact details. So that really works for me. I get a lot of inquiries, and yes, law of average, which is in the sales, works fantastic. And law of average, I'm sure you would be knowing that if you approach 10 prospect, when I say prospect, they have to be your prospect, not the customers. Okay, it's not that every in numbers, in sequence 10 people. No, they have to be your proper prospect. So proper 10 prospects, if you approach, you will definitely close 1 deal. So that is the law of average. So out of 10, you will get definitely 1 deal closed. And that's really worked with me
wonderful. So I'm sure you can also look into it. LinkedIn is one platform. Then there are certain networking, offline networking is also there. So I go and attend those meetings also. And that's how I develop relationship. And once people know you, you have to be visible, either offline or online. Both you have to be visible. So people know you, and when they need something, they will definitely approach you. So this is the way I'm working, and it is really giving me success, deals. And thank you, Abhilash and Imran, for giving me the platform to share my thoughts. Thank you. Most welcome and congratulations, Pushpalata. Keep on using these strategies and keep on building yourself and business for yourself. Great. Two things from Pushpalata's conversation. One, sell mat karo, educate people. You should educate people. That's very, very important. And she talk about the law of average. If you have read a book called Questions Are the Answer by Alan Pease, तो उसमें आपको और अच्छी तरह से पता चल जाएगा. It's a very small book. You should read that book. Questions Are the Answer. Questions are the answer. सवाल ही जवाब है. It's by Alan Pease. You should read that book. You will understand law of average very well in that book. It's just 100 or 120 page book. You should go for that. So wonderful. Once again, congratulations, Pushpalata. Pushpalata, for the insight. So I hope the जो कहते हैं blueprint जो है negotiation का, deals का, थोड़ा बहुत at least 1% भी clear हो गया होगा. So at least you can the most important part what Pushpalata said is keep on approaching. Keep on networking, right? सबसे important है you should go out of the way and connect with people is very, very important today's age, because आप क्या करते हैं, at least there are many entrepreneurs out there, right? So you have to connect with people who can help you with your goals, achieving your goals. To connect with people, because I am part of a lot of networking groups. Anybody wants to connect to this networking groups, let me know. I will ask the admin to add you, right? There are many free groups also. So try to put your message across. I used to be a part of a lot of networking groups जहाँ पे I used to go and give presentations. जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, देखिए ये सारी चीजें हम लोग क्यों शेयर कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज. और पुष्पलता जिन्होंने क्रैक किया डील विद HR कंपनीज, शी इज नॉट सेलिंग, शी इज डिसेमिनेटिंग नॉलेज. तो ये सारी चीजें जरूरी है. गो आउट एंड शाउट आउट लाउड with what product you're giving and come out of a comfort zone. Very, very important, right? एक जगह हम लोग we are sitting at home and thinking business will come, नहीं होगा. Try to network, collaborate and go out. पहला डील होगा शायद वर्कआउट नहीं करेगा, दूसरा शायद वर्कआउट करेगा, तीसरा नहीं करेगा. इस मोर एंड मोर प्रेजेंटेशन, जैसे इमरान जी ने बताया, क्वेश्चंस आर द आंसर्स. वेरी, वेरी ब्यूटीफुल बुक. एक बहुत ही छोटा सा बुक है. प्लीज रीड दैट बुक बिफोर यू गो आउट एंड अप्रोच फॉर योर कन्वर्सेशन, फॉर डील क्लोजर्स, नेगोशिएशंस के लिए. ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको, राइट? स्टेप बाय स्टेप प्रोबिंग कैसे करना है, डील्स क्लोज कैसे करना है, क्या राइट क्वेश्चंस पूछने हैं, वो सारी चीजें आपको इस बुक के जरिए मिलेंगे. बहुत ही पावरफुल बुक है. Very important for all of us to know. And trust me, sales is nothing like कोई हमको डरने की जरूरत नहीं sales के बारे में. It's a process. You start doing it more and more. You enjoy the process and you'll reap the benefits. Even in banking sector, जब मैं when I was working with the banking sector, now also so वहाँ पे sales is a position with the most lucrative position where you get the most maximum incentives, right? To master that part is not tough. You have to keep on working on that. So hope leaders, you have enjoyed today's session. I think थोड़ा सा idea आया होगा, थोड़ा सा inputs मिला होगा, how you can approach and you can do the tie-up with school and institutions. So all the very, very best, because जब तक आप start नहीं करेंगे, approach नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि पानी कितना गहरा है. So start doing it. You will learn in the journey. You will succeed. Celebrate. If you fail, move on and next opportunity and learn from that. Repeat that process again and again. So that with that note, the saying which I stated in the beginning, if I get my foot in, I can get the rest of myself through the door. So with that note, we wish you all the very best and God bless you. Take care. Bye-bye.